Dr. Sadat Hanif Dar, and I am the registrar at Mirpur University of Science and Technology and hosting the inaugural session. It is indeed matter of immense pleasure for me to welcome His Excellency Sardar Masood Khan, President of Azad Jammu and Kashmir and Chancellor Mirpur University of Science and Technology, Mirpur Azad Kashmir. I take this opportunity to formally welcome Honorable Vice Chancellors, Public Sector Universities of Azad Jammu and Kashmir, eminent entrepreneurs who are speakers of today's webinar, registrars of the universities, dean faculties, chairpersons, faculty members, and students for their participation in today's webinar on entrepreneurial intention among engineering students, COVID-19 challenges, and economic stimulation. With the permission of session chair, I would like to proceed for inaugural session. I would like to request Dr. Sajjad Ahmed, Director Institute of Islamic Studies, for recitation of Holy Verses, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيम। तर्जुमा, इंसान दर हकीकत खसारे में है सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Entrepreneurship is the dynamic process of creating incremental wealth and innovating things of value that have a bearing on the welfare of an entrepreneur. Mirpur University of Science and Technology in Azad Kashmir is putting all efforts to produce young entrepreneurs who can contribute towards the socio-economic development of the country. With these words, now I would like to invite Professor Dr. Syed Dilnawaz Ahmed Karnezi, Vice Chancellor, for opening remarks of this. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Sardar Masood Khan Sahab, Engineer Hassan Munir, Chaudhry Shoaib Saeed, Engineer Rizwan Chaudhry, Chaudhry Fayyaz Ahmed, Dean Faculty of Engineering, faculty members, representative from different universities, the vice chancellors, the registrars, and their teams from public sector universities of Azad Jammu and Kashmir. Ladies and gentlemen, let me welcome all important participants who spared their time, especially our Excellency Chancellor Sardar Masood Khan Sahab, for taking keen interest in developing research culture and conferences and seminars for importance which are related towards the development of the student potential and market-oriented technologies, so that our students, once they complete their degree, they are not looking for the job, but they should create job for the other peoples as well. Fortunately, Pakistan is one of the important countries of the world where today the youth population is the highest. I mean, more than 60% of the population comprises of the youth. So it's very important to find high professions and also make them
so that they can contribute in the development of the communities, in the development of the country, in the development of the world, and as well as in the service of the humanity as well. His Excellency Sardar Sultan Sahab, let me brief you that University of Science and Technology, Mirpur University of Science and Technology, have on very important engineering programs for the last more than 35 years, and they have produced potential graduates and graduates who established very important companies, engineering companies, and are performing very well throughout the world. And today, of course, we are facing challenges of global and economic situation. Development is suffering lots because of the lockdown and other problems related to COVID. So it was an important topic which was directed by His Excellency that we shall proceed on the discussion how we can solve these problems, not only related with the COVID only, but also to meet the challenges of the world related to the development of the engineering and the industries in the world. So I appreciate the effort by the Dean Faculty of Engineering, is Hassan Mujtaba Jafi and his team for organizing this very important seminar and webinar. It's a great pleasure to invite you to the webinar Entrepreneurial among engineering students. The goal of entrepreneurship education, of course, is very important. I am very thankful to the is to encourage the engineers to start the entrepreneurship, get hands on startups. This webinar is designed to share the latest information on entrepreneur education for all the students, researchers, academicians who are involved in training students and researchers and engineering academic activities. This webinar highlights various success stories of the renowned entrepreneurs and young graduates who have been successful entrepreneurs. We are confident that you will try a presence and collaboration. One of the missions of the 21st century is therefore to encourage the social and economic development of communities through venture creation, entrepreneurship developments, work. Our first opinion about whether or not the entrepreneurship can be taught, a proposal to deal with this innovative issue is through the spread of entrepreneurial culture in educational projects using engineering graduates where the entrepreneurship discipline has been implemented. This webinar is such an initiative to promote awareness and entrepreneurial education among the engineering students. The involvement of undergraduates in intellectual property protection leads to interesting questions related to how best to align engineering interests with institutional policies and practices, since most are not employed by their universities that faculty and many universities are. The number of entrepreneurship programs at universities targeting have grown substantially in the last decade in the West. Understanding these practices and beliefs to help the development of pedagogy and theoretical models around entrepreneurship education within the universities of Azad Jammu and Kashmir. Let me once again thank the Dean Faculty of Engineering for this webinar and wish him success in inducing the entrepreneurship role among the engineering students and graduates. And I will now hand over the Registrar Must Engineer, Dr. Saadat Ali Dar, to proceed to the next session. Once again, thank you, sir. Your Excellency, Chancellor, University of Science and Technology, and all public sector universities of Jammu and Kashmir, are special interest and presence in today's webinar. Of course, your guidance and your vision is always helping the universities to involve policies and the stakeholders to
create to make best professionals in the university so that they can create names throughout the world for the universities of public sector universities of Azad Jammu and Kashmir. So thank you all, ladies and gentlemen. I hope at the end of this webinar, you all will be very well aware about the thought of this webinar and will face the challenges which are coming. Thank you very much, sir. Thank you. I would like to request all the honorable members participated in this webinar to please mute your mic, please. Ladies and gentlemen, it's great honor for me to invite His Excellency Sardar Masood Khan for his kind address, please. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, let me start by congratulating Mirpur University of Science and Technology for organizing this webinar. And I also like to thank Professor Dr. Syed Dilwaz Gardezi for putting together this webinar, and the university administration members who are hosting this webinar today on a very important subject. I think that we decided, all the chancellors of public universities in Azad Kashmir decided some time ago that we will have webinars, and distancing, which had become mandatory because of the COVID-19 pandemic, should not deter us, should not stop us from holding seminars and conferences. And these conferences that we are holding are topical, of topical interest, of interests which impinge on our economy's security and our economy's growth. So this seminar too has chosen a very, very important subject. So I think that the discussion, I've had a look at the panelists, and they are focusing on one single issue, which is about entrepreneurship, and I appreciate that. I think that I also appreciate what is different in this seminar is that you have involved private sector, and I think that this is germane to your subject, because when you talk about stimulus, economic stimulus, I mean, these participants are most relevant. Let me first talk about the devastations of the virus. The devastation is out of proportion. It is, in fact, it has affected the entire world, the developed world, and also the developing countries alike. And in fact, some of the most developed countries, the most developed economies have been hit the hardest. So, and globally, I think that the international economy has shrunk by 3 to 4%, which is a massive reduction in growth. And it has affected supply chains all around the world. It has disrupted our way of communication, way of transacting and doing businesses. So I think this is a big, unprecedented crisis that we are facing. I'll come to that a little later, but before that, our first responsibility is to beat the virus, this lethal virus, because the cause of the economic meltdown or this tardiness in growth has been caused by the COVID-19 pandemic. So this is the first thing that we must address. And I think that after
initial hiccups, and because of lack of knowledge, because of the novel nature of this virus, the world could not respond effectively. But then it scrambled to its feet and it has come up with new solutions, whether they were medical solutions or non-medical solutions, or now in the form of vaccines. We've come up with a vaccine, which shows that probably this wave of, or several waves of coronavirus would die down. But we do not know yet. New countries are being infected. I was reading about Taiwan. Taiwan and the southern part of China are preparing for a new wave. And India, as you know, has been devastated. We also suffered, we in Pakistan and Azad Jammu and Kashmir suffered from the third wave. And it was lethal. It has claimed many lives, many precious lives. We've lost friends and relatives. Everybody has lost a friend or relative. And these friends and relatives, members of our families, or I don't know, extended families, they have been devoured by this lethal virus. So I think that we need to take these new ways, we have to adopt new ways to eliminate the pandemic. This in itself, would ensure that our economy is revived. Because with the COVID-19 pandemic, we had to resort to extended lockdowns, and they affected the growth of economy or normal economic business massively. So this is the first priority. And I don't want to go into that because in several seminars we've talked about it, and I think some of the universities have been assigned to come up with their recommendations for dealing with this pandemic. The second thing that I want to talk about is economic stimulus itself. Now, we will have to go back to the Great Depression of the 1930s. It was during that period that the global economy and national economies were hit adversely, and all the nations of the world had to come up with new economic theories and practices to revive their economies. And it was quite an effort. I'll tell you that if the famous economist had not come up with his theory, Mr. Keynes, if he had not come up with those theories, we would not have been able to revive the economies in the during the Great Depression of the 30s. I refer to that because this is the second most serious economic slowdown that we have witnessed. And so that's why we have to learn something from the Great Depression of the 30s. And I think that the world knew that when the economy would come to a standstill, when people would be confined to their houses and they would lose their livelihood, and businesses would be closed, and supply chains would be disrupted, not only nationally but internationally. One of the solutions was government interventions or government stimuli that were given by the government in the form of food packages or some sort of support to the income and to the household, because the households, these daily wages, they could not earn their livelihoods because of these restrictions and lockdowns. So there were these packages. But in addition to the packages, the government had to visit, whether it was the government of Pakistan or South Kashmir, or whether it was the IMF or other Bretton Woods institutions, or whether it was Washington itself or Beijing, they had to come up with economic stimuli in the form of fiscal and monetary measures. And therefore, in Pakistan also, trillions of
rupees were spent, and in Azad Kashmir, billions of rupees were spent to give income support to the people, particularly to the poor households. Now, but we know, and the economists know, and entrepreneurs know, that this is a band-aid solution. This is to treat the symptoms of the disease, not to fight the disease or eliminate it. So I think that stimulus packages are a short-term measure. The real long-term measure is that we should have robust growth in our economy. And it is easier said than done. I mean, you recall that Pakistan was hit hard, and so was South Kashmir. And if you add up the losses, I think that Pakistan's economic growth had plummeted to less than 2%. I think that at one point it was minus, less than 1%. And then it is bouncing back. Now the forecasts are that our economy would grow by economy, I mean GDP growth would be 4%. So the economy is bouncing back. This is because of investment in construction industry, also investment in jobs and livelihoods. And they are not all dependent. The survival of the economy is not dependent on economic stimuli. So the real hope lies in entrepreneurship. You know, in Azad Kashmir, for instance, I can tell you that we have more than 100,000 employees in the public sector. Now, this is a big burden on the exchequer, but in addition to that, that makes our economy non-productive. I mean, we're doing well. I mean, growth-wise, we're doing well comparatively. But if we want to make Azad Kashmir an engine for growth, rapid growth, given its terrain, given its resources, given its human capital, we have to switch to entrepreneurship. You know, decades ago, we started these industrial zones in Mirpur and Bhimbar, but they did not take off. For a while, they were successful, and we have industries in their embryonic form all over Azad Kashmir. But we want to take them to the optimum level. And therefore, I can tell you that under the rubric of China-Pakistan Economic Corridor, we are contemplating establishment of a special economic zone in Mirpur. That itself would stimulate economy. And we're also planning to construct a motorway from Mansehra to Muzaffarabad, to Kohala, to Azadpatan, to Mirpur, to Mangla. And that motorway can be connected with Islamabad Lahore motorway. And this again would create many opportunities for commerce, for businesses, for livelihoods. But I think that we are also generating electricity at a rapid speed, whether it is the Karot hydropower project or Kohala hydropower project or Azadpatan. We're also planning many other hydropower projects. So these would also stimulate economy. But let me go back to entrepreneurship and these people that you have selected. They have rich background in businesses, and I think that they can give innovative solutions. I can tell you that whether it is in the West, the most advanced countries, let's say the United States or the European economies, when we talk about entrepreneurship, when we talk about startups, you know, it has to be a leap of faith. Technology is available. Must itself, I mean, is a nursery for producing engineers, but their competencies are not utilized
adequately after they have graduated, because they can't be absorbed in the market. And if they try to get jobs, they do not get the opportunity to start their own businesses or startups. I think that last time I was in Mirpur Must, and young graduates had in fact organized an exhibition. I also went to uh, one of their centers where they were trying to um, uh, encourage incubation centers. And so this is something very good. But we have to do it at an industrial scale. It should not be a one-off success story. All around, we should invest in entrepreneurship, and we should produce entrepreneurs. People are still shy. They want secure jobs. They want government jobs, and even when they join businesses, they want these jobs which are pensionable or which had some sort of other assurances. The one prominent feature of entrepreneurship is this ability to take risk. If you don't take risk, you are not an entrepreneur. And this entrepreneurship, this starting off, this effort aimed at starting off enterprises, is a step in the right direction. But at the same time, it needs special kind of individuals. You can produce engineers, but you'll have to work hard to produce an engineer, an entrepreneur out of an engineer. And that's the kind of deliberation I'm sure that you will be doing today. And I welcome that. The other thing is that new technologies are available, and all the technologies that we have, in the kind of technology that we're using today to communicate to each other, or the mobile telephony, or internet-based products that we are using, they too would become obsolete in the next 5 to 10 years. And we have a new generation of technologies, and we have new opportunities, new horizons which are opening up. Therefore, I would say that don't try to catch up with what the advanced nations have already done, because if we do that, we'll be behind the curve. What we should do is that we should fully understand these emerging new technologies and invest in them. And I think that our graduates in Azad Jammu and Kashmir, they are familiar with these technologies. They are being taught these technologies in the University of Kochi, at Must, also in other universities, University of Punch, for instance, University of Azad Jammu and Kashmir, our oldest university, and the University of Art. So I can also tell you that the government of Azad Jammu and Kashmir wants to invest heavily in multiple sectors. I talked about infrastructure earlier and an industrial zone, but we also want to invest in tourism, in extractive industry, also in agriculture, or also human development. And all these endeavors would require innovative solutions, innovative approaches. My last point is that this is not the last virus that we have grappled. In the coming future, there would be new viruses as lethal as this virus, or probably more lethal. And we do not know whether the next virus would be an accidental release or a bioweapon. We do not know. So academics and scientists, they have to prepare themselves for new waves of such viruses, such pathogens, toxic pathogens, which can wreak havoc with the world economy and national economic landscapes. So
what I'm suggesting here, the last point, is that while giving economic stimuli, we should reflect preparedness and response strategies, and we should allocate resources for preparedness and response strategies in our national budgets, in our planning and development strategies. That's a must, that's an imperative, because this fight is not over. Our economies, as we have seen, are fragile and vulnerable to such assaults, such attacks. So we should prepare well. I wish you success with this webinar, and I think that with this, we are completing the first round of webinars, because by doing this is the last seminar that the universities have held, and we will start, inshallah, the second round of webinars. So I thank all of you, particularly the participants, who will share their diverse experiences and enrich the discussion that is taking place today. Thank you so much, Dalawaz Gadesa, and all the brilliant panelists who are participating in this webinar. Thank you so much. Sir, thank you very much for your thought-provoking address. Now, for vote of thanks, I would like to invite Professor Dr. Hassan Mujtaba Jafri, Dean, Faculty of Engineering and Technology, please. Hello, Assalamu alaikum everyone. On behalf of the Faculty of Engineering and Technology, the students, the engineering graduates of the faculty, we are thankful to the Honorable Chancellor, President of Azad Jammu and Kashmir, His Excellency Sardar Masood Khan, Vice Chancellor Professor Dr. Syed Dil Nawaz Ahmed Gardezi, for initiating and providing this particular platform to conduct this webinar with their full support and presence. This webinar is primarily focused in promoting culture and opportunities in context of entrepreneurship in the young engineering community under global situation of COVID-19 pandemic. On behalf of Faculty of Engineering and Technology, I would like to welcome our keynote speaker from United Kingdom, an international engineering entrepreneur, Engineer Hassan Munir, for taking out time for his extremely busy schedule. Special thanks to our eminent entrepreneurs, businessmen from Mirpur and surrounding, Chaudhry Suhaib Saeed, Director Azad Group AJK, Engineer Razwan Chaudhry, CEO 7 Star Private Limited, Chaudhry Fiaz Ahmed, CEO Siraj Steel Industries Private Limited, as invited speakers. In addition to that, we warmly welcome to our speakers for the third session, our own recent engineering graduates who have adopted the path of entrepreneurship and able to launch successful startups after many hardships and set examples to our students and our fresh engineering graduates. This seminar is possible due to the collective effort between Faculty of Engineering and Technology, NTC MUST and Registrar Office. I would like to appreciate special efforts of Engineer Dr. Suhaib Manzoor, Resource Person, Engineer Musa Jaral, and Imtiaz Bhatt along with his team. I would like to inform that we are also broadcasting all sessions live on social media, including Facebook and YouTube, for our students and graduates in collaboration with professional engineering student bodies of the MUST. I would like to point out that due to ongoing phenomena of single global village as well as CPAC, there are many opportunities for new business ventures and entrepreneurships. If we are not on our toes to avail these entrepreneurial opportunities, the vacuum will be filled by the subsidiaries of international or multinational companies in the field of construction, communication, logistics, transport, software, agriculture, food, energy, and general services, including maintenance. Most of them are directly related to the various fields of engineering and technology. Thus, this is one of the most important reasons to conduct today's seminar. Startup doesn't always mean one need to develop a new technology or solution, but finding a market opportunity or need in context of local, national, or international demand in industry, consumer market, and daily needs. In Pakistan, we have multifold of such opportunities in area of automation, smart technologies, instrumentation, and machinery. I believe we have a huge potential in startups, especially bringing existing technologies to Pakistan, adopting as well as modifying it for local and national need. Technology engineering
based startups can provide low-cost solutions and may reduce import burden on the economy of Pakistan that will save billions of dollars every year. We have observed that significant number of engineering students and fresh engineering graduates are working as freelancers in the international market, and they are hesitating to initiate startups based on their skills due to lack of guidance and supportive program. They just need to believe in themselves, and I don't see any hindrance that stop them turning into their freelancer job into a multi-billion dollar international company. Pakistan Engineering Council and National Curriculum Review Committee of Higher Education Commission have already implemented entrepreneurship as a compulsory subject in engineering education. Pakistan Engineering Council has already started a series of conferences and webinars to motivate young engineering graduates for such ventures. Faculty of Engineering and Technology is running 5 undergraduate programs with level 2 accreditation under outcome-based education according to Washington Code. Due to extreme hard work of the faculty, we have achieved this milestone after strict review and several physical visitation of Pakistan Engineering Council. It is a blessing for our engineering graduates that they are now considered as registered engineer in all Washington Code signatory countries like Canada, Australia, New Zealand, USA, without any further qualification test or verification. I fully praise the chairperson and faculty to make this dream possible. As a part of this process, we have fully established industrial advisory boards for every engineering degree program, which regularly meet twice a year and review engineering program and curriculum as per industry need. In the end, engineering, sorry, there was an interruption. In the end, I would like to highlight a potential that every year hundreds of final year projects in engineering degree programs done in universities of Pakistan that may lead to many startups that need free mentorship as well as to small startup grants. I would like to make a humble suggestion that new and updated rules as following technological advanced countries needs to be implemented for the engineering faculty of public sector university so that the faculty can take active part in startups, especially based on their supervised project. In short, startups stimulate local and national level economy by generating revenue and employment opportunity from a labor to a top management level. Again, I would like to thank Honorable Chancellor and the President of the State, His Excellency Sardar Masood Khan, and Vice Chancellor Professor Dr. Syed Dilnawaz Gardezi for their support to conduct this webinar. Warm welcome to our keynote speakers and other speakers. Pakistan Zindabad, Kashmir Parindabad. Thank you very much. Thank you. Thank you. At the end, I would like to extend my sincere thanks to His Excellency Sardar Masood Khan, President Azad Jammu and Kashmir, Chancellor Mirpur University of Science and Technology for his kind participation and chairing the inaugural webinar session. Further, I would like to extend thank you for your kind participation to all participants in today's webinar. Thank you very much. Now, first inaugural session is now over, and now we will proceed towards the technical session that will be chaired by Dr. Khurram Parvez Ambar, Director ORIC. Thank you all. Thank you. Okay. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Now we are proceeding towards the technical session, and technical session will start at 12 p.m. inshallah. And the technical session will be chaired by Engineer Dr. Khurram Parvez, Director ORIC Mirpur University of Science and Technology. Thank you all. Thank you.
ओ बंदा था माफ है, बहुत डेंजरस था। एक काजी था उनके फौजी होता था, हूँ काजी बेचारा, हूँ काजी को गल नहीं सुनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
Ladies and gentlemen, let me introduce myself. I am Engineer Dr. Khurram Parvez. I'm Director ORIC at MUST. I'm very thankful to Honorable Dean, Faculty of Engineering, for giving me an opportunity to chair this session. I'm sure that we all will be enjoying this exciting session and where we will listen our international and national entrepreneurs, and we will actually know about their different challenges they faced in their struggle and their success stories, and particularly what they had been facing since the emergence of COVID-19. Before I invite the first speaker, let me give you a brief introduction and achievements of Office of Research, Innovation and Commercialization. ORIC at MUST was established in 2013, and our major responsibilities are to identify different research grants opportunities for our faculty and students. Then another responsibility is to facilitate our faculty to apply for research and travel grants, provide legal, administrative, and financial management support of research grants, to support commercialization, licensing of the university research products. ORIC also holds lectures and seminars with guest speakers to create awareness about various opportunities. We have recently developed our 5-year strategic plan. Since 2013, we have awarded 107 small research grants to our faculty members. Our faculty members have won so far 31 HEC and non-HEC projects. So these are different achievements, but at the same time now we have also established a business incubation center. We have received HEC policy, and for that we have arranged 25 slots for startups, including 10 for our faculty members, 10 for our alumni, and 5 for virtual startups. Again, for Business Incubation Center, we have developed our 5-year strategic plan. We have started an initiative for a startup business plan competition among our faculty members and for our students. We are also trying to establish links between our faculty members and different industries and investors. And at the same time, we are also arranging capacity building trainings for different startups. So these are some initiatives we have taken here at MUST. And Alhamdulillah, during COVID-19, 2 of our projects which were introduced during the emergence of COVID-19, we have those 2 projects have served the community. And one of the speaker today in the later session, he will talk about those projects. So, ladies and gentlemen, let's move to the first speaker. I will briefly introduce Mr. Engineer Hassam Munir. Hassam started his career as a graduate engineer by developing SCADA solutions for Heathrow Airport. Since then, Hassam has designed, tested, and commissioned several automation systems, including Crossrail in London and Oil Rig in Norway. Hassam is now a director, founder of Pearlite Control Systems, which are systems integrator, and work with several other subcontractors to deliver various projects across the UK. I would like all of you to welcome our international speaker, Engineer Hassam Munir. Hassam, over to you. You have got 15 minutes. Thank you. Thank you, Muhammad Amir. Assalamu alaikum, everyone.
Firstly, I would like to thank for University of Science and Technology, especially Dr. Suhail for inviting me to this webinar. I believe this is a very important topic that needs to be discussed over and over again to motivate our youth to focus more towards entrepreneurship rather than going for the job, and especially since businesses have suffered greatly from COVID-19 the past year. I believe there is a great chance for tech startups to capture the market. During the last year, engineering technology has kept us going through this time, and I believe advancements in tech will help our society by making our life more sustainable in near future as well as in many years to come. And I think the countries which had more tech startups have sort of coped relatively better during this past year. For example, I'll give you an example of UK, where I know personally many tech startups, they started during last year, and within the year they had turnover within of millions of pounds. Just a bit about myself, bit of background. Like I mentioned earlier, I started my career as a graduate engineer. I worked for SCADA system at Heathrow Airport. And then I moved to another company where I designed and integrated SCADA for various bonuses. Then I started my own company. I started Inventico Limited, which initially was sort of web design and a bit of control systems. But then I got a client in London, a Crossrail, and then I commissioned and tested the SCADA system. And then I got another client. That was before the COVID-19 happened. I got a project in Norway where I upgraded their oil rig. They wanted to make it from manual to automatic, so there was a lot of robotics and stuff involved. So there were quite a few companies working. So I had to deal with Norwegian companies, British companies, and certain other European countries as well. And at the moment, I am working. So I had Inventico, then I created another limited company with a few of my colleagues before at Siemens. And then we currently work provide our services in rail, water industry, and a couple of others as well. There are a few projects in the pipeline. Why did I start my own business? I think from very early in my career, when I was a graduate engineer, I realized that the job was not for me. I came across a lot of people who've been working there for many years, and they're kind of doing more or less the same thing as me, whereas I like challenges. And I figured out that if I don't move quickly or start my own business, I wouldn't be able to sort of live the career that I want to live. And secondly, I want to make more of an impact on a society, create more jobs, and feel a sense of accomplishment, which you can't do when you're working for someone else. So I did face few challenges, and I believe that everyone who starts a business, they will face a lot of challenges, and I learned a lot from them. And I believe that from my experience, all guys who want to and girls who want to start their own business, they can benefit. So I want to share a few lessons that I've learned. The first one, a very important one, is to have a goal. It's very important because we talk about startups. A lot of people that are personally know they've started many things instead of focusing on one, having on one goal, what you actually want to achieve in your life, and also what you actually want to do. You break it down in 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. Have a goal, what you want to achieve next year, year after, and have a 5 year goal, 10 years goal. And that goes into your personal life, in your business, and your
family life as well. But for business, most importantly, you have to have a clear vision on what you want to achieve from it. And even before you start a business, when you have a goal, you want to surround yourself with the people who have same ambitions, have same goals, have same level of energy that you do. Because if you don't surround yourself with a team that can push you and that can be your companion throughout the journey, you will not be able to achieve on your own. And especially myself, I started my journey alone, and I've found that there were far too many things that I needed to be considered, and then slowly slowly my team grew, and now we're 4 people, which I'm working towards, and including more people into our company. But yeah, it has benefited me greatly to have people who have same goals as me, and they keep me going and I keep them going. So it's a great relationship in that way. And there's a great American entrepreneur, Jim Rohn. He said that you are the average of 5 people you spend the most time with. So choose your time wisely where you want to spend. And Umar Saf, a lot of people know him. He's in the IT department for I think Punjab government as well. He said that once his mentor said that you only have limited energy in a day, so you have to choose and you have to spend it very wisely. One unnecessary meeting, one unnecessary interaction throughout your day, and your energy, your time is gone before you know it, and before you know it, your whole life just goes away like that. So you have to choose very carefully where you spend your time, and in the business as well. So when you start a business, where do you want to focus more? So do you want at the start of the business, do you want to, if you're manufacturing something, or if you're designing something, you want to focus more on designing, and then testing, and then getting the product out there. So you don't want to start advertising or start talking to people and wasting your time in other things when you're actually developing the product. So you have to have a focus, and you have to manage your time very wisely, otherwise the project can drag on for years. And once you've decided about your product, excuse me, so you need to work on and you've got a product. Then after that, you need to work on your creativity, or even before the product, you need to find when you want to make something, do you want to design something, you need to work on creativity. In the UK, I had many problems the way that the market is quite saturated as compared to Pakistan, I suppose, that in a way that there are lots of competition. So to be one step ahead of other companies, you need to be on top of whatever you're doing. So creativity plays a very important role. Although it's not relevant to engineering technology, there is something I want to share with you guys. I was watching a documentary about Ed Sheeran, the famous songwriter and singer, and I really liked his approach to the creativity. He said that just visualize your creativity as a backed up pipeline, and the first mile of piping is packed with the wastewater. This wastewater must be emptied before the clear water arrives. Because your pipe has only one exit, there's no shortcut achieving clarity other than first emptying that wastewater. So once you've generated enough bad output, your mind begins to sort of reflexively identifying which sort of is identifying the elements which cause the bad ideas or badness in your mind, and then it begins to avoid them. So
start pattern matching the novel ideas with greater clarity. The problem here is that most creators, most people who want to creativity, they never get past their wastewater. They sort of scribble down. If you open a black document and scribble down a few thoughts and then walk away because you were not stuck with gold, then you two did not get past it. So you have to get past through that initial resistance for your mind to open to new ideas. And that's helped me a lot during while competing with other companies in the market who are doing exactly the same thing that I'm doing at the moment. The next challenge, I would say, when doing a business or being an entrepreneur is you have to be ready to fail. So you've identified you have identified your niche. You've designed a product. You're ready to get to the market. You know there's a demand, but still you have to be ready to fail, because there can be another out of nowhere you can have a competitor who's got better product than you. Then you have to be one step ahead, and you have to have your risk assessment that if that product can go ahead, what are my other options? What I need to do, and it's very important, especially for the startups, providing because startups usually don't have access to much capital, and there is so much capital you can play with. I think last thing the last challenge I would say, especially it's associated with Pakistan, is a lot that we need to be a bit ethical, in a sense that in the UK especially, I feel sometimes that a lot of people there are a bit hesitant working in Pakistan, is reason being that we not stick to our deadlines. We sometimes compromise in our quality of the end product. We need to, especially to our youth, we need to fix that. We need to work harder on the ethical side of things as well. We need to stick to our deadlines. We need to provide what we promise, and that's the only way we're gonna succeed in the long run. In the short run, you can sell your product, or get one batch out, or do one project. But if you want the continuity, you need to be more ethical. COVID-19, I think it's blessing in disguise, in a sense, that the world has gone online. I know I came across a lot of companies every day which have based in the UK, but they outsource their work, automation, robotics, software to India. So why not Pakistan? We can change that trend. We can bring that money to our country, to Pakistan, from the UK. But that will require some work. That will require some products which can be generated from Pakistan, or services or system integrators which are based in Pakistan, so that we can sort of shift the pattern, the dynamics, and people go to Pakistan instead of other countries, India, Bangladesh, or any Eastern European countries. So yeah, these are some challenges that I've faced, and you might face when you start your business. So that would be me. Any further questions? The university have my email address, or you can add me on LinkedIn. I'm Hassan Munir, and I will be quite happy to assist if you have any inquiries. Once again, thank you very much.
Thank you very much, Hassan. Very motivating words for our young engineers. And honestly speaking, um, these were very, very motivational words you said. You started your journey alone, and now you have got 4 people with you in your company, and you want to make more impact by creating new jobs. So these are the things which obviously our young engineers, they need to be motivated, and listening young entrepreneurs like yourself obviously will motivate our young engineers. The message from Hassam, which I have summarized, I want to just repeat. You said that our engineers should use their energy effectively. They should not waste their time on any such activities which are not going to lead them towards a successful startup. Time management is another very key factor in the success. And then you also mentioned about creativity, and your message was like to that you should never give up and you need to be one step ahead of others. So thank you so much for giving such a nice, I would say it was like a nice lecture, and also motivational words for our young engineers. There will be a question and answer session, but that will be at the end of this technical session, and that will start at 1 p.m. I would like you to be there if any of our participants or students, they want to ask you any question. So that will be great. So now let us move to our next speaker. I would like to invite Chaudhry Suhaib Said, and let me give you a brief introduction of Chaudhry Suhaib Said. Suhaib did his master's in international business from the University of Salford, UK. He's currently heading a holding company, Azad Group, which has a diversified portfolio ranging from Toyota dealership to textile spinning and woven polypropylene sacks at Mirpur. He's a passionate motivational speaker, trainer, and facilitator. His areas of expertise are management and leadership, entrepreneurship, career development, democracy, and political participation. Sohaib is also executive director of Azad Group of Industries, which include Azad Textile Mills Limited, Toyota Azad Motors, Azad Megamart, Azad Filling Station, Azad Infotech, Amin Spinning Mills Limited, and Whether Polypropylene. I would like to welcome Sohaib, and I hope you will share your different challenges that you had faced in your career as an entrepreneur. So over to you, Sohaib. You have got 15 minutes. Thank you. Mohammed Damar sir. I hope everybody can hear me clearly, because unluckily the internet is very spotty, which is the situation all across Azad Kashmir. Amir sir, what is the mode of, language to conduct this? Are we limited to English, or we can use Urdu as well? First of all, just want to let you know I am Dr. Khurram. Basically, I'm using the ID of Amir. I'm Director ORIC. So please feel free. I'm not sure if we have got any foreigner here who cannot understand Urdu. So you are free to talk. You can speak in English or Urdu, whatever you prefer. Thank you. Thank you very much, डॉक्टर साहब. बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और एक डिपार्टमेंट के साथ एक लंबी एफिलिएशन है, और इट इज़ वन ऑफ दी, मतलब जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है यूनिवर्सिटी में, इसने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ भी काम किया. मैं साबिक सदर भी हूँ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का. पर आज का जो ये सब्जेक्ट है, ये कि एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशंस, स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो उसमें मैं बहुत कंसाइजली और ब्रीफली बात करूँगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पे मैंने ख़ुद बहुत काम किया, और एंटरप्रेन्योरशिप में समझता हूँ कि वो चाबी है
जिससे हमारी रियासत और मुल्क आगे जा सकता है। अगर मैं स्टेटिस्टिक्स शेयर करूं तो जो आपको मेगा साइज के बिजनेसेस दिखाई देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो बहुत छोटी तादाद में 85% जो बिजनेसेस हैं यूएसए में वो एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, और पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो गुंजाइश है वो इसी सेक्टर में है। तो ये जहन बनाना कि हमें एक शायद हम इतना बड़ा अमेज़न जितना बिजनेस बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं एक मोटिवेशन का मैसेज यहाँ पे इस तरह देना चाहता हूँ कि एक शाहिद खान साहब हैं, उसको सर्च करें, एक इंजीनियर हैं जो यहाँ से यूएसए गए और आज यूएसए में ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स बनाने वाली सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी उनके पास है। उस हवाले से उनका एक जर्नी जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काबिल जिसको कहते हैं कि स्टडी करने के लायक है कि देख एक इंजीनियर ने कितनी डेवलपमेंट की। ऐसे बहुत से इंजीनियर्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स में बहुत आगे गए। चंद दिन पहले मैं बैठा सोच रहा था कि अगर आप इनोवेशन की बात करें तो बहुत पोटेंशियल है। हमारे मुल्क में बहुत सी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेतहाशा इंजीनियर्स हैं, लेकिन अगर आप सिंपल प्रोडक्ट्स जो डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके डिज़ाइन देख लें कि हम एक एक्सट्रीमली गर्म मुल्क हैं, आजकल एक हीट वेव आई हुई है, हमारे पास कोई जिसको कहते हैं कि कोई डिसेंट कूलर नहीं है जिसके अंदर अच्छा वाटर ब्रेकिंग सिस्टम लगा हो। तो आज वही देसी कूलर्स चलते हैं जो पता नहीं किस ज़माने में ईजाद हुए थे। हम उसमें कोई इंजीनियरिंग इनोवेशन उस किस्म की नहीं लेके आ सके। अगर आज आप ट्रेडिशनल गीज़र्स देखें, जो गैस गीज़र्स हमारे घर पे लगे हुए हैं, उनमें भी कोई इंजीनियरिंग इनोवेशन, तो ये कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं। ये वो चैलेंजेस हैं जिनके सोल्यूशन या इनोवेशन इंजीनियर्स लेके आ सकते हैं या एक सोसाइटी उनसे तवक्को रखती है। जहाँ तक बात है एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा कोई हल नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन है हमारे पास गवर्नमेंट साइड पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो बहुत लिमिटेड हैं। हम लोग पहले से एक बहुत हैवी स्ट्रक्चर लेके मूव करें एजेके में। अगर आप जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब्स पैदा एंटरप्रेन्योर्स करते हैं और फिर बाकी लोगों को मिलती हैं। लेकिन जो यंग एंटरप्रेन्योर्स बनने के ख्वाहिशमंद हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मेरी एडवाइस जो उनको होगी कि वो पहले जो है कहीं ना कहीं पे कोई जॉब एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करें। लाजिम नहीं है कि वो पेड ही हो, वो इंटर्नशिप की शक्ल में हो सकती है, वो अनपेड जॉब की शक्ल में हो सकती है, मुख्तलिफ उसकी शक्लें हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप पैसे अपने वालिदैन के या अपने एक बिजनेस हमेशा रिस्क होता है, उस पर आप इन्वेस्ट करेंगे विदाउट एनी एक्सपीरियंस तो आपको ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी और फेलियर का चांस ज़्यादा है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप में एक अहम बात है कि आप अगर देखेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप में लोग फैसले जल्दी करते हैं। उसको अगर आप कंपेयर करें पब्लिक सेक्टर से, तो पब्लिक सेक्टर में डिले इन डिसीजन मेकिंग इज़ द सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ फेलियर। गलत फैसला शायद उतना नुकसानदेह नहीं होता जितना एक फैसला ना लेना या डिले करना से नुकसान होता है। इसीलिए जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो दे आर क्विक डिसीजन मेकर्स, और यही वजह है कि प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें तेज़ चलती हैं और फैसले जल्दी होते हैं। गलतियां वहाँ पे भी होती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और चलते हैं। ये एक की डिफरेंस है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के दरमियान। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपको रिस्क टेकिंग होना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने रिस्क लिया, उनको नाकामी हुई पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, फिर जाके उनको कामयाबी हुई। लेकिन एक आदमी जो रिस्क लेता ही नहीं है, घर से निकलता ही नहीं है, वो कहीं तक नहीं जा सकता। तो इंजीनियर्स के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंजीनियर्स बहुत कम एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं। तो इंजीनियर से मेरी एज अ एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ ये तवक्को है कि वो इनोवेशन की तरफ जाएंगे, ऐसे सॉल्यूशंस लेके आएंगे
जैसे जो मार्केट में रिक्वायर्ड हैं, और साथ ही साथ प्लस कुछ चीज़ें आपने ऐसी कंसीव करनी होती हैं कि जब गाड़ी ईजाद नहीं हुई थी और साइकिल का मुमकिन ज़माना हो, उस टाइम अगर आप लोगों से पूछते कि उनको क्या चाहिए, तो वो कहते कि हमें एक तेज साइकिल चाहिए, लेकिन जहाज़ का कोई उस टाइम जिक्र ना करता, क्योंकि उस टाइम सोचा नहीं जा सकता था। ये एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट था जिसने एक जहाज़ ईजाद किया और एक इनोवेशन लेके आए जो पहले से मार्केट में मौजूद नहीं थी। ये भी इंजीनियर्स जो हैं ज़्यादा बेहतर लेके आ सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी इनोवेशन जो बेहतर हो। लास्टली जिस पॉइंट पे मैं इसको क्लोज करना चाहूँगा कि आज टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी फैसिलिटेटिंग और एनेबलिंग फैक्टर है। आज आप किसी मुतल्लिक, अगर आप आज इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक दिन भी यूनिवर्सिटी ना जाएं, आप आज वो सब सब्जेक्ट्स, वो सब करिकुलम, वो सब ऑनलाइन चीज़ें मौजूद हैं, यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन फ़ायदा उठाएं कि आप उससे जो चीज़ें गेन कर सकते हैं। आज आप दुनिया में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचें, रिस्क लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और एक और चीज़, खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन एबिलिटी। मैं देखता हूँ बिलखुसूस जो हमारी अपनी स्टेट से बहुत से बच्चे आला तालीम लेके आते हैं, लेकिन उनमें इतनी खुद एतमादी नहीं होती कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के या प्राइवेट सेक्टर में एक्सेल करने की कोशिश करें। और मुझे यकीन है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर नतीजे निकलेंगे। लास्टली मैं ये चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को कि हम लोग जो लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, एजे के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो मीरपुर में मौजूद है, वो ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करती है, बिजनेस सेटअप्स के साथ कनेक्ट करती है, उनको वो सब नॉलेज देती है जो उनको रिक्वायर्ड होगा अपना रिस्क कर्टेल करने के लिए। सो कोई बच्चे भी जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनको मैं और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पर्सनली फैसिलिटेट करेंगे। यही सिंगल रास्ता है, ओनली वे फॉरवर्ड फॉर अस टू सक्सीड एज अ स्टेट, एज अ नेशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। Thank you very much, Sweb. It had been an honor listening to you, and we have met many times. You are a very big source of motivation for all of our young engineers. Sweb, what I have just, let me summarize the message which you had actually you wanted to deliver to our engineers. I totally endorse your idea of having some experience before starting any sort of startup, any business. Job experience obviously gives a lot of insights to a person, and it helps him to basically develop more market-oriented products before he could just go and start a new business. Also, you talked about the risk element. That is obviously one factor. Entrepreneur should take quick but wise decisions, and they should be able to. Sorry, you want to say anything? Okay, and they should have a confidence on their abilities. You talked about new products such as coolers and geysers. So let me just share with you that we are already working on these two products um, in mechanical engineering department. We have already won major funding from Higher Education Commission of Pakistan for developing basically energy efficient cooler. Our faculty member, he is working on it. For geysers, one of our faculty member, Dr. Yamin Yunus, he is working on the enhancing the efficiency of geysers. So yes, our engineers and our students, they are putting their efforts, but unless they have a platform, they cannot get into the right direction, and ORIC is always there to provide them these opportunities. Thank you for your offer from the
Chamber of Commerce. ORIC is already in connection with Mirpur Chamber of Commerce, and thanks to the president, they had always listened us, and they have assured us for their continuous cooperation. So thank you so much for sparing your time. If you can join us again at 1 p.m. because that there will be a 30 minutes question and answer session. I would like you to be there if in case any of our young engineers wanna talk to you directly. So thank you. So let's move to the next speaker. Interestingly, I had personal um, experience of having some conversation with engineer Rizwan Chaudhary, our next speaker. He's a very young, talented entrepreneur. He did his bachelor's in electrical engineering from MUST, Mirpur University of Science and Technology. Sorry, he's not there. Okay, all right. Okay, I have been informed that engineer Rizwan Chaudhary is not available at the moment. But I want to share his profile with you because he's also a true source of motivation for our young engineers. He did his bachelor's in electrical engineering from MUST. He's a member Central Executive Committee Chamber of Commerce at AJK, and he's also president of Young Engineers Association of Mirpur AJK. He had basically the turning point in his career was that he searched job for 4 months after graduation, and he got a job on ad hoc basis, and then he started his own business, and now he's a CEO of a company 7-star. So he's a true source of motivation for all of our young engineers who want to be entrepreneurs. So let us move to the next speaker, Chaudhry Fayaz Ahmed. So Chaudhry Fayaz Ahmed is the director of Siraj Steel Industries, which is manufacturing graded steel in Mirpur Azad, Kashmir. He has done his MBA from Iqra University, Islamabad. He joined his family business in 2016, and since then he's looking after their steel business. Since his joining Siraj Steel, the Siraj Steel has become the only successful steel producer in Azad Jammu and Kashmir. Recently, Siraj Steel has installed an automatic production facility, being the first mover in steel industry. So I welcome Chaudhry Fayaz Ahmed. You have got 15 minutes to share your experience and to motivate our young engineers. Chaudhry Fayaz Ahmed, over to you. Thank you so much, Dr. Sir. Can you hear me? Yes, we can hear you. Please. Thank you so much. My name is Chaudhry Fayaz Ahmed, and I would like to thank Dr. Soeb Manzoor for inviting me to this webinar. मेरे लिए बड़ी खुशहाल बात थी सुनने में जब आया कि हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हमारे इंजीनियर्स पे एंटरप्रेन्योर पे वर्किंग कर रही है तो मेरे लिए ये चीज़ एक अच्छी भी थी इस सेंस में कि जितने भी रिसेंटली कुछ टाइम से एचईसी के पॉलिसी आई है कि एंटरप्रेन्योरशिप को इंजीनियरिंग डिग्रीज में शामिल किया जाए तो उस हवाले से ये है कि टॉपिक भी बहुत अच्छा है इसमें मोटिवेशन आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट उसको अचीव करने के लिए मेरे नज़दीक अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो उसमें मोटिवेशन आपकी हर एरिया के लिहाज से डिफरेंट होती है ठीक है हमारे पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में आपको अपने जो एक्सटर्नल आपके जो एनवायरनमेंट है उसमें से आपको मोटिवेशन ढूंढनी पड़ेगी आपके लिए मोटिवेशन और हो सकती है किसी और के लिए मोटिवेशन और हो सकती है वैसे एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि मलिक रियाज है उसे आपने वो एक मशहूर किस्सा सुना होगा कि
उसकी बेटी बीमार थी और सारा वो जब उसके पास टैक्सी के लिए पैसे नहीं थे, उसने घर से बर्तन देकर उसको पैसे दिए। उसके लिए शायद मोटिवेशन ये थी कि उसको पैसा बनाना था, उसको एक कामयाब होना था इस हवाले से। उसका बेटा अली रियाद है, उसकी मोटिवेशन और है। तो हर एक की मोटिवेशन वेरी करती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके लिए ऑनेस्टी, पैशन, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। एक इंजीनियर वकार साहब थे जो पानी से गाड़ी चलाने चले थे, तो उसका आपको सबको अंदाजा है कि वो क्या चीज थी, क्या सिलसिला था। तो उसमें ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है। दूसरी मैंने जो चीज एक फेस की है कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें हमारा कोई ना कोई सिलसिला रहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के साथ, मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ। तो सॉरी, एक चीज मैंने अनलकीली फील की है कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं जब ये डिग्री ले लेते हैं माशाल्लाह, तो थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है कि हमारी जो जितने पाकिस्तानी एनवायरनमेंट है इसमें जो पहले लोग हैं सारे, उसमें ज्यादा लोग इंजीनियर्स नहीं है, उसमें से पढ़े लिखे नहीं है, जो स्किल्ड आपकी लेबर है, कह ले फोरमैन कह ले, इस तरह। तो आपको उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनसे इंटरेक्ट करके ही आप उस चीज में मोटिवेशन, इनोवेशन लेकर आ सकते हैं। उसके अंदर आप क्या कहते हैं उसको, जिद्दत लेकर आ सकते हैं किसी भी चीज में, ठीक है, अगर आपने उसको ऑटोमेट करना, ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना है। लेकिन जिन इंजीनियर्स के साथ मेरा शायद इत्तेफाक हुआ ऐसा कि वो मतलब उनके एक माइंड सेट था कि हम इंजीनियर्स हैं और ये लोग उस तरह के डिग्री होल्डर नहीं है, तो उनको नहीं पता जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, और वो चीज उनके सुनने को भी तैयार नहीं होते थे। तो बड़े इस तरह के हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के प्रॉब्लम्स रहे थे। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑटोमेशन की है, उसमें कामयाब हुए हैं, और ऑब्वियसली इंजीनियर्स की मदद से की है। तो इस चीज में कोई शक की बात नहीं है। जो हमारे छोटे मोटे, जिस तरह सोहेब साहब ने बताया कि गीजर्स हैं, वाटर कूलर्स हैं, और डॉक्टर साहब ने बताया कि हम उन पे काम कर रहे हैं, तो बेशुमार एग्जांपल्स अगर आप ढूंढने को जाए, मतलब आप भरा हुआ इंटरनेट मोटिवेशनल स्पीकर से भरा हुआ है, मोटिवेशन से भरा हुआ है कि किस तरह जे रॉकफेलर ने काम स्टार्ट किया, हेनरी फोर्ड ने कैसे काम स्टार्ट किया, इन सब लोगों ने। लेकिन ये कि आपको अपने एक्सटर्नल फैक्टर से आपको इनोवेशन, मोटिवेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो वो मोटिवेशन आपके लिए कोई भी हो सकती है। मेरी मोटिवेशन ये थी कि जब मैं काम में आया, मेरी मोटिवेशन शायद वो कि आप ये नहीं कह सकते, मेरे वालिद साहब की मोटिवेशन डिफरेंट थी ऑब्वियसली। मेरी मोटिवेशन ये थी कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता था, और एंटरप्रेन्योरशिप मेरे नजदीक एक मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है कि आप फौरन दौड़ के, आपको बड़ा इसमें पेशेंट होना पड़ता है, ठीक है, और पेशेंस से आपको मुजाहरा करना पड़ेगा इसका। इसमें फेलियर्स आते हैं जब आप काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाहर मार्केट में बहुत कंपटीशन है, ठीक है। जब कंपटीशन आपने फेस करना है तो उसमें आप में अगर मोटिवेशन नहीं होगी, आप कंपटीशन फेस नहीं कर सकेंगे। तो उस मैराथन में आपको लगातार लंबा अरसा दौड़ना पड़ेगा, ये फौरन आपका रिजल्ट्स नहीं अचीव हो सकते। इसी तरह मोटिवेशन डेफिनेटली एक आपको ड्राइव करती है आगे की तरफ, और आपको कंपेटिटिव मार्केट में आपको उधर फाइट करने में मदद करती है। और एक ऐसा एनवायरनमेंट भी होना चाहिए कि जिसमें आपका ना सेफ एनवायरनमेंट हो रिस्क लेने के लिए। अगर आप फेल हो जाए तो सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए उसके लिए। तो यंग इंजीनियर्स को बस ये मैं यही कहना चाहूंगा कि मोटिवेटेड रहें, बस अपने इर्द गिर्द मोटिवेशन की वजह ढूंढे अपने अंदर से। कि आपकी मोटिवेशन की रीजन पैसा हो सकती है, आपकी मोटिवेशन की रीजन ये हो सकती है वालिदैन को खुश करना है, किसी को कम्पीट करना है। बस मोटिवेशन ढूंढे अपनी, उस चीज के पीछे दौड़ पड़े, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर इनवाइटिंग मी। आपके पास माइक। थैंक यू। Thank you so much, Chaudhry Fayaz Ahmed. It was great listening you. मैंने कुछ चीज़ें नोट की जब आप बोल रहे थे, तो I would like to again repeat basically all those key points of your speech. कि everybody needs a sort of ignition, like एक आपका लाइफ में अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको वो it could be different for different people. So मोटिवेशन ज़रूर सर्च करें। बट जैसे थोड़ी देर पहले सुहेब और हमारे जो पहले स्पीकर थे इंजीनियर हसाम, उन्होंने भी कहा कि एथिक्स का ज़रूर हमें ख्याल रखना चाहिए। उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑनेस्टी और वो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आपने एक किसी का हवाला भी दिया, कोई वकार साहब जो थे जो कह रहे थे कि पानी के ऊपर वो चला सकते हैं गाड़ी। तो ऑब्वियसली जब हम अपने कैरियर में एक्सेल कर रहे होते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए।
इसके अलावा आपने भी वही थोड़ा रिपीट किया, जैसे स्वेब ने भी ये चीज़ मेंशन की, that our engineers when they basically graduate from universities, तो obviously जब तक वो थोड़ा फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो जाना चाह रहे हैं या किसी और तरफ, मेरे ख्याल में चूँकि मैं खुद भी 7 years मैंने ग्रेजुएशन के बाद फील्ड में जॉब की, और वो जो एक आपका एक्सपीरियंस होता है, ये आपके अंदर आपकी क्रिएटिविटी और बहुत सारी स्किल्स को बेसिकली अनलॉक करता है। तो वो हमारे इंजीनियर्स जो यंग इस वक्त इंजीनियर्स सुन रहे हैं, आई थिंक कि हमारे जो स्पीकर्स ने इस चीज़ पे स्ट्रेस किया है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग सम एक्सपीरियंस। वो जॉब का एक्सपीरियंस हो सकता है, या जैसे स्वेब ने कहा कि इट कुड बी एन इंटर्नशिप। सो फेलियर से आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि मैं अपना आपको अगर बता दूं, मैंने आज तक अपना फेसबुक का बैकग्राउंड चेंज नहीं किया, मैंने जब से अपना अकाउंट बनाया, और वो कायद-ए-आज़म की कोट है कि फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि मेरी डिक्शनरी में फेलियर का वर्ड ही नहीं है, तो फेलियर से बिल्कुल हमें नहीं घबराना चाहिए। थैंक यू सो मच इंजीनियर हसाम मुनीर, चौधरी स्वेब सईद। इंजीनियर रिजवान हमें ज्वाइन नहीं कर सके, वी हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हिम। चौधरी फयाज अहमद, थैंक यू सो मच। अभी अगर आप इजाज़त दें, तमाम स्पीकर्स, इफ़ यू आर अवेलेबल, वी कैन हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिस्कशन basically, and opportunity for our young engineers to have interaction with yourself. So if you are available now, we can have a very quick interaction session, which will not last more than 30 minutes. Is it okay? All right. Okay, so the session is now open for questions. If any young engineers, they want to talk to our honorable speakers, you can simply raise your hand or give us an indication, and we will actually unmute your mic. क्या हम सबका mic कर सकते हैं unmute? If you could do that, I think that will be better. Sure होगा? I think ये थोड़ा फिर इस तरह शायद एक दफ़ा आप करके देखें, like let us give opportunity to everybody. So unmute कर दें। नहीं हो सकता? Anybody who wants to talk to our honorable speakers, you can simply write down a message here in the chat box, and we will unmute your mic. Okay, you have all the participants, you have got now the option of unmuting your mic. You can unmute your mic and you can speak. They have no permission to unmute their mic? Okay. So far, I'm not having any indication from anybody. Sweb, can you listen? Can you hear me, Sweb? Okay. Sweb, there was a project. Let me proceed on this discussion regarding some products, because you had been very active member of society here in Mirpur, and thanks to you, you had always supported our initiatives. So there was a project which we actually got funding from Higher Education Commission of Pakistan. We developed a multi-purposed energy efficient stove for the hilly area communities. You know, people are cutting forest wood for the cooking purpose, and they are burning a very precious wood. At the same time, the cooking exercise in the hilly area in Azad Jammu and Kashmir is such that our women, they cook food inside,
especially during the winter, and the whole smoke is basically trapped inside the room. So there is a WHO report about the hilly areas of Azad Jammu and Kashmir that the chronic diseases are again rising in these areas. So keeping those two challenges in mind, we designed an energy efficient stove. Alhamdulillah, we got funding of 10 million from Higher Education Commission of Pakistan. That project has been completed now. As a part of that project was a job to basically start a new startup company, basically to give our students, the researchers who who participated in this project. So that product is now ready to be launched. The only problem which that startup is facing now is basically that we are looking for an investor who could basically come forward and invest for the raw material, and also, we need a three-phase uh, electricity connection. We need a building for that. University is supporting in all different directions. Our Honorable Vice Chancellor is very supportive. So how would you actually take this and advise us so that we can move in a positive direction from here? Over to you. Thank you, Dr. Saab. It's very kind of you. इस मामले पे मेरी चंद सजेशंस होंगी. एक तो ये है कि कोई इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक उसको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या वायबिलिटी पता नहीं चलेगी. अगर इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हो कि क्या है तो तब सिर्फ इन्वेस्टर्स आएंगे. प्लॉट, थ्री फेज मीटर, ये कोई मसला नहीं है. ये चौधरी फयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं. इन्होंने माशाल्लाह एक बड़ा स्टील यूनिट लगाया है नीचे इंडस्ट्रियल जोन में, न्यू इंडस्ट्रियल जोन में. इसीलिए लगाया कि इन्होंने हिसाब लगाया कि भाई मैं अगर खुद स्टील बार्स बना के बेचूं तो मुझे क्या बचत आएगी. अगर बचत नहीं आनी तो आई मीन ही विल नॉट इन्वेस्ट. सो अनलेस हमारे पास फिजिबिलिटी ना हो हम उसको इन्वेस्टर्स को पिच नहीं कर सकते. लेकिन जहाँ तक ये है, ये प्रोजेक्ट इसमें एक मुख्तलिफ शक्ल भी ली जा सकती है. एजे की गवर्नमेंट एनवायरनमेंट पे कंसर्न भी है और बहुत पैसे भी लगाती है. मैं खुद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल का मेंबर हूँ. मैं ये समझता हूँ कि जब आप आज़ाद कश्मीर के जो जंगलात थे वो कोई लगभग 56% थे जब आज़ाद ये खित्ता आज़ाद हुआ, और आज लगभग जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो 12% हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो ये NGOs हैं इनका एस्टिमेट 9% है. हमने अपने सारे जंगल काट के खा गए हैं उसको मतलब इनकम समझ के, और अब वी आर एट अ डेंजरस स्पॉट. ये जो आज शिद्दत की गर्मी है इसकी भी एक वजह डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, और ये बात प्रूवन फैक्ट है. ये जो स्टोव है, ये जो हमारे डिफ़िकल्ट हिली एरियाज़ हैं, एक बहुत लंबी आबादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ बैठी हुई है, वहाँ पे एजे के गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट को सब्सिडाइज करना चाहिए और इन्वेस्टर्स को कुछ पास से देना चाहिए इसको चलाने के लिए. आपके पास बेतहाशा दुनिया में ऐसी मिसालें हैं. जब 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में अमेरिकी बैंक बैठ गए तो अमेरिकन हुकूमत ने आके उनको बेल आउट किया. इसी तरह मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो बेतहाशा जॉब करती हैं, जब वो बरतानिया में बैठने लगी तो ये जो बरतानवी हुकूमत ने आके उनको सब्सिडाइज किया, उनको बेल आउट किया, उनको फंडिंग दी. आज आज़ाद कश्मीर में कोई एक ऐसी मिसाल भी नहीं है, नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल, जहाँ पे किसी प्राइवेट को सब्सिडाइज किया हो. या ये हमें इसमें कोई बदनीति शामिल नहीं है, इसमें एक चेंज ऑफ माइंडसेट शामिल है. जब तक हम प्राइवेट सेक्टर को आगे नहीं लेके आगे पुश फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आगे नहीं लगाएंगे कि दे मस्ट लीड, तब तक ये तब्दीली नहीं आ सकती. इट इज़ नॉट सिंपली पॉसिबल. सो इसमें मेरी सजेशन है कि एक फाइनेंशियल या बिजनेस फिजिबिलिटी बने कि क्या ये फिजिबल है. दूसरी बात ये कि ऐसे बिजनेस को विच इज़ फॉर अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज और गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट. तब ये जाके मुमकिन होगा. पहले 2-4 साल
HEC ने आपको इस प्रोजेक्ट के लिए 10 मिलियन ग्रांट दी, विच इज़ आई मीन बहुत अच्छी बात है। HEC ने जो काम किए वो बहुत अच्छे थे, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जिनका इम्पैक्ट बिलियंस का है, 10 मिलियन लगाना कोई मसला नहीं है। 10 मिलियन ज़ाया भी हो गया, इट इज़ पीनट्स। जिन आप देखें, अगर ये स्टोव कामयाब हो गया तो आप इसका इम्पैक्ट देखें कितना ज़्यादा होगा। तो ये मैं समझता हूँ हम इससे ज़्यादा मतलब पौधे लगाने में पैसे लगा देते हैं। आगे अगर ऐसे स्टोव होंगे तो हम पौधे कम काटेंगे, तो उससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि और इस मामले को, इसकी फिजिबिलिटी भी बनाए, हम भी मदद करेंगे उसमें, और साथ साथ फिजिबिलिटी बनाने के बाद गवर्नमेंट को कहे कि भाई इस मामले को सब्सिडाइज करे जो भी इन्वेस्टर इसमें आए। इन्वेस्टर इंशाल्लाह हम चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से ले आएंगे, प्रोवाइडेड कि फाइनेंशियली फीजिबल हो। थैंक यू सो मच सोएब। फयाज साहब, आप अगर इस पे कुछ कहना चाहें। माइक उनका काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी, अभी आपको मेरी आवाज आ रही होगी। अच्छा, बिल्कुल सोएब साहब ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कि इसकी फिजिबिलिटी सबसे पहले आना बहुत जरूरी है कि ऐसे कोई बंदा अपने मतलब को पैसे क्यों लगाएगा। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता होता हूँ कि कस्टमर्स आते हैं कि लोग इस तरह जिनके साथ हमारी क्रेडिट लाइन चल रही होती है, हमारे कस्टमर्स हैं जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, तो कभी उनसे पेमेंट वगैरह मांगे तो अक्सर आगे से कहते हैं कि बेतबारी है आपको। मैंने कहा यार बेतबारी हो तो बंदा किसी को इतना पैसा तो नहीं देता है क्रेडिट में, और आपके पास कोई एक अननोन बंदा आया उसे आपको आके के 5,000 रुपया मुझे दे दें, तो आप उसको दे देंगे? कभी नहीं देंगे, कि आपको उस पर एतबार नहीं होता। ठीक है, तो जिस समय तक एक फिजिबिलिटी प्रॉपर सामने नहीं आती, आपके सामने एक चीज नहीं आती कि कितना पैसा रिस्क पे है, चले इतना है, तो उस समय तक कोई इन्वेस्टर उस तरह से सामने नहीं आएगा। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इसमें हमारी जो स्टील इंडस्ट्री है, इसमें एक मशीन यूज होती है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही है वो, CNC रोल नॉचिंग एंड इंग्रेविंग मशीन। बेसिकली लेथ मशीन होती है, लेकिन उसके साथ CNC अटैच होता है, और वो जो हमारे स्टील रोल्स होते हैं उस पर इंग्रेविंग करते हैं, रोल नॉचिंग करते हैं। तो वो मशीन हमने काफी इधर से सोर्स करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में कोई बंदा बना रहा हो, क्योंकि हमारे लेथ मशीन बीको कंपनी एक टाइम पे एक्सपोर्ट करती थी चाइना में 1960s में लेथ मशीन पाकिस्तान से। तो लेथ मशीन तो पाकिस्तान में बेशुमार है, लेकिन उसको ऑटोमेट करने की जरूरत है। तो अनफॉर्चुनेटली हमने अभी वो रिसेंटली चाइना से इंपोर्ट की है, तकरीबन वो हमें $80,000 की उधर से मिली है, और वो सिंपल एक लेथ मशीन है जिसके साथ एक कंप्यूटर अटैच है, बिल्कुल अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें। लेकिन उसका ये है कि यहाँ पे जो थोड़ी बहुत मिल भी रही थी, उसमें उनका रोल डाया जो उसमें हम लगा सकते थे वो बहुत छोटा था। जो स्टील इंडस्ट्री के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 330 मिलीमीटर के लिए रिक्वायरमेंट है, उसका डाया इतना होना चाहिए कि उस पर उतना वो पार्ट घूम सके। तो इस तरह की चीज़ों पे मेरे ख्याल से काम करना चाहिए। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें। ऐसी ये इसकी वजह ये है, इस पे काम ये करना चाहिए कि स्टील इंडस्ट्री इस टाइम जिद्दत की तरफ जा रही है। आज से 2-3 साल पहले स्टील इंडस्ट्री थी वो मैनुअल स्टील इंडस्ट्री थी, जैसे चल रहा था अरसे से चीज़ें आ रही थी। अभी मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से चीज़ें जिद्दत की तरफ जा रही हैं, ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान में हज़ारों स्टील मिल्स हैं, कई ऐसे हज़ारों वर्कशॉप्स हैं जो जिनका लेथ से रिलेटेड काम होता है, ठीक है, लेकिन वो आज भी मैनुअल मशीन ही चल रही है उनके पास। तो ये CNC रोल नॉचिंग, इस तरह की चीजें अगर हमारे पास अपनी बनना शुरू हो जाए तो इसमें फौरन हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है, और हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं, और उधर से हमें बेशुमार रेवेन्यू भी मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फयाज साहब। डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे यंग इंजीनियर्स आपको अभी सुन रहे हैं, सोएब आपसे मैं मुखातिब हूँ, अगर आप काइंडली थोड़ा इस चीज़ पे रोशनी डालें कि एंटरप्रेन्योरशिप में इस वक्त कौन से वो हार्ट एरियाज़ हैं जिन पे हमारा एक यंग इंजीनियर जो 7th या 8th सेमेस्टर में अभी पढ़ रहा है और पास आउट होने वाला है, और आगे जाके उसने जॉब का चैलेंज जो है वो फेस करना है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, सारे चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन से वो एरियाज़ हैं जहाँ पे इस वक्त ज़्यादा फोकस चल रहा है ताकि एक उनको डायरेक्शन मिल जाए? और यही मेरा क्वेश्चन इंजीनियर हसाम से भी होगा
तो पहले अगर सुहेब आप इस पे रोशनी डाल दें, फिर मैं हसाम की तरफ जाऊंगा। अच्छा, मेहरबानी डॉक्टर साहब। उसमें बहुत सी मतलब कि बहुत वास्ट क्वेश्चन है, बट चंद फील्ड जिनका मुझे इल्म है मैं वो आपको कह देता हूँ, स्पॉट कर देता हूँ। एक तो ये है कि आजकल एनर्जी जो है, बिलखुसूस सोलर एनर्जी, ये जो ऑल्टरनेट एनर्जी है, इस पे बहुत है। ये एक नई फील्ड है, इसमें गुंजाइश है। जो ट्रेडिशनल फील्ड हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, सिविल है या, लेकिन ये एक नई फील्ड है, इसमें गुंजाइश है कि आप इसको देख सकें, स्टडी कर सकें। हमारे साथ ये कमाल साहब भी मौजूद हैं। कमाल साहब इसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आज आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, मैं यकीन से कहता हूँ सबके घर पे यूपीएस लगे हुए हैं। बैटरीज भी एक इसी से मिलता जुलता है। बाकी फील्ड का मतलब कुछ ऐसी फील्ड हैं जिनका मुझे इतना इल्म नहीं होगा, मुमकिन है उनमें बहुत पोटेंशियल हो, लाइक केमिकल। लेकिन दूसरी जो फील्ड में आइडेंटिफाई करना चाहूँगा वो है आईटी। आज आप यूएस, कनाडा, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स या सबसे ज़्यादा स्कोप आईटी का है। एक कंपनी आई जिसका नाम था व्हाट्सएप, आज हम सब के मोबाइल में है। और उस व्हाट्सएप, जब वो व्हाट्सएप सेल हुई तो लगभग उस वक्त, ये कोई 4-5 साल पुरानी बात है, मुझे गलती ना लगे तो 19 अरब 19 बिलियन डॉलर्स की वो सेल हुई। और उस टाइम पाकिस्तान का जो टोटल फॉरेन डेट था वो कोई 22 बिलियन के लगभग था। सो एक सिंगल एप्लीकेशन का इतना इम्पैक्ट था कि उसने टोटल पाकिस्तान के फॉरेन डेट जितना इम्पैक्ट पैदा कर दिया। और उसके बाद जो क्योंकि ये आईटी जो है ये भी एक इंजीनियरिंग की शाख आप समझ लें, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ। अगर आप ये ऊबर और करीम को देखें तो एक मतलब एप्लीकेशन ने वर्ल्ड वाइड जो टैक्सी और ये जो मार्केट थी या ब्लैक कैब मार्केट थी उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो अब आप इंजीनियरिंग सोल्यूशन जो हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो मेरी तजवीज़ जो होगी या सजेशन होगी वो एनर्जी, बिलखुसूस ऑल्टरनेट एनर्जी जिसमें सोलर, विंड, बाकी चीज़ें मौजूद हैं, और आईटी और टेक्नोलॉजी की तरफ होगा। थैंक यू सुहेब। इसमें आप नहीं समझते कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे आपने सोलर का कहा, विंड का कहा, इनमें रिस्क एलिमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक जो यंग इंजीनियर है जो पास आउट हुआ है, ऑब्वियसली उसके पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर वो अपना फील्ड चूज़ करना चाहता है तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी एक कंपोनेंट होगा। तो इन एरियाज में आप कैसे देखते हैं कि रिस्क को आप कैसे देखें? ऑल्टरनेट एनर्जी का आप जाके स्टैटिस्टिक्स स्टडी कर लें। इस टाइम फास्टेस्ट ग्रोइंग जो फील्ड है एनर्जी में, ना वो हाइड्रो है, ना वो कोल है, कोई भी नहीं है, थर्मल नहीं है, हाइड्रो नहीं है। इस टाइम सोलर इज शूटिंग अप लाइक अ स्टार। सो इसलिए, और रिस्क फैक्टर तो है, बट आपने वो जो उसको कहते हैं उन रिस्क फैक्टर्स को कर्टेल करना है। सो ये मैं इस बुनियाद पे ये बात कहता हूँ कि ये ऐसी फील्ड हैं जिनमें गुंजाइश मौजूद है इनोवेशन की, एक्सपेंशन की। और हर साल जो सोलर की टेक्नोलॉजी है वो सस्ती होती जा रही है, और जो उस साल की नई टेक्नोलॉजी आती है वो थोड़ी महंगी होती है, और जो पिछले साल की होती है क्योंकि जिद्दत आ रही है तेज़ी से। और चाइना बहुत बड़े पैमाने पे सोलर पैनल्स बनाता है और बहुत उस पर रिसर्च इन्वर्टर्स बनाता है। पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी मुझे नज़र नहीं आती जो उस पैमाने पे उस क्वालिटी के सोलर पैनल्स बनाती है। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब शायद कुछ असेंबलिंग है, ये कमाल अहमद कमाल साहब को सही पता होगा। बैटरीज आप देखें हमारे पास इंपोर्ट होती थी, अब इंपोर्ट में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी है तो चलें, लेकिन हम लोग कोई सूटेबल बैटरीज नहीं बना सके। तो बहुत गुंजाइश है इन चीज़ों में। अब हमारे पास अच्छे इन्वर्टर्स आते हैं। एक टाइम था कि वो देसी से इन्वर्टर्स आते थे, उसमें किसी हद तक जिद्दत आई, बट ये सारी जिद्दत हमारी तरफ चाइना से आई है। हमारी अपनी इस पे रिसर्च बहुत कम है, और ये कॉमन हाउस होल्ड इशूज़ हैं और नेशन वाइड इशूज़ हैं।
कोई एक स्पेसिफिक आदमी का नहीं है, तो बहुत बड़ी मार्केट्स हैं जिनको टैप किया जा सकता है। Thank you, Soeb. Hassam, can you hear me? Hassam? Yes, I can hear you. Okay, Hassam, what are your thoughts about the hot areas? If I ask you regarding for our young engineers, we do have different disciplines, like our young engineers belong to different departments like civil engineering, mechanical, electrical, electronics, software engineering, computer system engineering. So what would you suggest that what type of startup they should look forward, because you do have experience of different challenges you faced during the early period of your setting up of your business. So that will be great if you could share your experience. Oh, thank you. That's a very good question, in my opinion. I believe that, just like Ms. Faith said earlier as well, that if you go, if you start your career with a job somewhere, get experience like 2-3 years, and identify the market trends. Doesn't matter if you're a civil engineer, software engineer, or electrical engineer or mechanical engineer. If you identify the market trend, what's the need of the industry, then you can start working on that and create your own product rather than just jumping onto the business straight away and start a business, because you can't tell a civil engineer to start a software company, go to IT or go to other stuff. But if he just continues his path into gets a job for like 2, 3, 4 years, identifies what is required, and then take on from there step by step rather than just jumping the gun. Hope that answers the question. Thank you so much, Hassam. So this session is almost over now. Again, I'm giving opportunity to all participants. If anybody wants to interact with our honorable speakers, you have got a chance to talk to them directly. Otherwise, we do have the email details and other contact details of our speakers. If anybody wants to interact with our speakers, we can share those details with you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. अस्सलामुअलैकुम सबको, जिन्हें सब पार्टिसिपेंट जो जिन्हें इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अहमद कमाल, जैसे सोहेब भाई ने बात की, मैं सोलर बिजनेस से रिलेटेड हूँ। आगे मेरा इंशाल्लाह मुझे इनवाइट भी किया गया है। तो सोहेब भाई से थोड़ा सा मैंने बात करनी थी, क्योंकि अब ये अच्छा मौका मिला है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, जो ना यहाँ पे बिजनेसेस के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और बड़ी ठीक बात की है सोहेब भाई ने कि मतलब इस वक्त मैं जिन अगर बिज़नेस को देखता हूँ, इस वक्त इस ईयर में हमारा कारोबार 5 से 6 गुना ज़्यादा है जो हम लोग पिछले साल कर रहे थे, और उससे आगे बूस्ट ही कर रहा है। मतलब मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है कि मैं कल कोई प्रोजेक्ट लगा सकता हूँ। मैं इस वक्त आगे 2 वीक बाद का टाइम दे रहा हूँ। अब उसकी वजह क्या बन रही है, क्योंकि मेरे पास जो इंजीनियर्स हैं ना, वो तैयार नहीं है काम करने के लिए। तो इसके लिए एक हम लोगों को बनाना पड़ेगा कि जना एक सेटअप हो जहाँ पे इंजीनियर्स तैयार हों। मैंने यूनिवर्सिटी वालों से बात की और माशाल्लाह डीन साहब से बात हुई, जाफिर साहब से, उन्होंने जना हमारे साथ इंशाल्लाह एक MOU हम लोग साइन करेंगे जिसमें ट्रेनिंग्स तैयार होंगे। और मैं उनको तैयार करने के बाद सिर्फ ये नहीं कह रहा कि उनको हम लोग जॉब पे रखेंगे, वो सब के सब अपना बिज़नेस चलाएंगे, वो लोग अपना बिज़नेस उसको रन करें, क्योंकि हम लोगों के अंदर इस वक्त इस तरीके से है कि सिर्फ लड़कों ने जॉब करनी है। और इंजीनियर्स अपने आप को समझ रहे हैं कि हम लोग अगर इंजीनियर बन के आ गए तो मतलब हम लोगों को भाई कोई हाई लेवल पे दे दें काम, हम लोग सिर्फ ऑर्डर करें। कोई भी लड़का इस तरह का काम नहीं कर सकता, कामयाब नहीं हो सकता। एंटरप्रेन्योरशिप में खुद हाथ से काम करना पड़ता है, फिर हम लोग आगे चल सकते हैं। अभी थोड़ी सी हम लोगों को जो मुश्किल आ रही है वो गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें इस तरह की हैं कि इंशाल्लाह हो जाएंगी ठीक। मसलन नेट मीटरिंग का जो चल रहा है पूरी दुनिया में, आज से 10 साल पहले नेट मीटरिंग मौजूद थी। पाकिस्तान में भी 5 साल पहले आ गई, लेकिन क्योंकि एजुकेशन नहीं है, लोगों को एजुकेट नहीं किया गया,
तो उसकी वजह से वो नेट मीटरिंग से फैसिलिटेट नहीं हो सके। हम लोग अपनी जितनी बिजली जो जनरेट कर रहे हैं इस वक्त, उसमें से मैं मतलब आज़ाद कश्मीर की बात करता हूँ, जो सोलर सिस्टम लग रहे हैं उसमें से 60% 70% हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई कंजम्पशन कोई नहीं है। वही हमारे पास हम लोग अगर ग्रिड को फीड कर देंगे, आज इस वक्त अगर सिचुएशन देखें हमारे पास वोल्टेजेस बिल्कुल डाउन हुए हुए हैं, हम लोग जिन अपनी बिजली को उस कैपेसिटी को पूरा नहीं कर सकते। अगर वही हम लोग फीड कर रहे होंगे यहाँ से बिजली को, तो वो हम लोग आगे लेके चल सकते हैं। अच्छा, अब जो बात करने का मकसद ये था कि जिस तरह अभी सोहेब भाई ने बात की, हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है लोगों की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, और प्लस लोगों को एजुकेशन जो है ना बड़ी सख्त ज़रूरत है, बहुत ही सख्त ज़रूरत है। जो आप सर भी बात करते हैं खुरम साहब कि जिस फील्ड में रिस्क फैक्टर क्या है, इस फील्ड में रिस्क फैक्टर नहीं है, सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है। मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर 5 किलो वाट का सिस्टम लगा दिया तो उसमें 5 किलो वाट ही निकलेगा। अब उनको एजुकेट करना है, भाई 5 किलो वाट का सिस्टम लगाया, उसमें 60-70% आप उसमें से ले सकते हो हर मौसम के। तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है जिसको हम लोग लेके अगर चलें तो एक पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, इस बिज़नेस का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी मैंने जना चले इनपुट मैंने कहा मैं भी दे दूं, क्योंकि बिज़नेस के रिलेटेड बात हो रही थी मेरे, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं बात कर लूँ इस लिहाज से। लेकिन ये सोहेब भाई भी जानते हैं, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट का थोड़ा सा आगे पीछे इन्वॉल्वमेंट है अभी की, तो ये नेट मीटरिंग के हवाले से हमें फोकस करना पड़ेगा। हमें मुख्तलिफ हल्कों में इस चीज़ की बात उठानी पड़ेगी ताकि हम लोग हर बंदा हर शख्स कंट्रीब्यूट कर सके इस चीज़ के अंदर। थैंक यू, मैं बस ये बात करना चाह रहा था अभी। थैंक यू अहमद। आपके साथ पहले भी बड़ा पर्सनल एक मीटिंग्स आपके साथ रही हैं डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने जो सोलर सिस्टम लगाया उसमें आई वांट टू लेट एवरीबॉडी नो दैट अहमद प्लेड अ वेरी वाइटल रोल in designing and in the installation of 20 kVA system in electrical engineering department. एक और हमारे जो सेकंड सेशन में स्पीकर हैं वो भी अलुमनाई हैं, वो भी सोलर के अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं। तो अहमद आपने जो पॉइंट उठाया ट्रेनिंग्स का, आई डू एग्री विद यू दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन सोलर, especially we are a developing country and we are facing a lot of energy crisis issue since I would say last 30 years. So trainings, in terms of trainings from the ORIC platforms, we will definitely encourage our researchers, young researchers, our engineers, and we will request you people to actually join your hands with us. And if you could spare your times during different periods of the year, we can basically prepare a schedule for such trainings. And those trainings should be basically based on the capacity building of our young engineers or researchers who want to basically start their own business. So ORIC office is always available there. Being the director of ORIC, I request all of you to share your opinions and whatever you can basically assist us. That will be great. So thank you everyone. If anybody wants to speak to our speakers, this is the last chance. The time is actually over because one of our speaker, he didn't show up. So in theoretically, our time is up for the first technical session. The second technical session will start at 2:30. So all of you are requested to join again at 2:30. If anybody has got any question, please you can speak now. Otherwise, we will now close this session. So I'm giving this last opportunity to everyone. Okay, seems nobody is there to thank you everyone, and special thanks to all our honorable speakers. Hassam, thank you so much. We wish you success in your career over there. I'm sure you will excel in your career. And Chaudhry Fiaz, thank you so much for sparing your time. Your motivational words, definitely they will leave a lot of influence on our young engineers. Sweb, thank you so much for sparing your time. And Ahmed, also thanks to you. I would personally attend the second session
I'm not the chairperson of the second session, but I will be there to listen to you because um, I have a lot of interest in solar. So I will definitely, I shall be there personally. So thank you so much, everyone. Thank you for your valuable time. So this technical session is now closed. We will come back at 2:30. Thank you.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are conducting a day-long seminar on COVID-19 challenges and economic stimulation options. And we had very good session in morning session. The Chancellor Must and Vice Chancellor Must Indian Engineering guided us very well regarding the topic, and then we had a technical session. In technical session we discussed in detail that how our young engineers can stimulate their options and their how they can start their entrepreneurship and how they can enter into the field of business. And now this is the session in which we will get the ideas and will share the experience of our young entrepreneurs. These are the success stories of our young graduates, some of from Department of Electrical Engineering and some are from the Department of other departments of Faculty of Engineering and Technology. Actually, what is the situation that our society is highly dependent on government jobs, and in fact in all over the world the universities are considered as economic engine. Actually the engines of the economy are economic engines, and that is there are two types of the business. One is based on the innovation, that you are carrying your research in a field and you are developing or innovating your new technique or new product, and then you are marketing that product, or you are getting patent. And the other form is that you are using an existing technology to start your entrepreneurship. And unfortunately we are lagging both the aspects of entrepreneurship. The Higher Education Commission is also asking that we have published many research articles and we have got impact factor, but where is the impact? That is from impact factor towards the impact on the economy. The knowledge-based economy, the message of economy, knowledge-based economy is that we should move from impact factor towards impact on the economy, that we should, our graduates, our bachelors should enter in the field of entrepreneurship or in the field of business using their own techniques, using their educational background in order to have a successful entrepreneurship. It starts from your, the idea behind is to convert or to change from the theoretical knowledge aspect towards a practical approach. It starts from small classroom projects, and in which you combine some small components to get a small output, or to establish a small module, and then towards a final project in which you combine different modules and you discovered interrelationship and their collective working in order to have a product. And then the actual field comes, the actual battlefield, that jumping to the actual battlefield, that in the field of business, in that is the field of entrepreneurship, that depending upon your educational background and depending upon your techniques or your own innovative solution, or using some existing technique which and seeing its scope in your society, in your environment, and getting the motivation and to start some new entrepreneurship and to produce job for someone. Instead of seeking jobs, you are going to the to produce the jobs for others. So here we have some examples from our university, that one is the engineer Ahmed Kamal Sheikh, who started its entrepreneurship in the field of renewable energy, in the field of solar technology. And the other example is engineer Sami Naseem. Engineer Sami Naseem started a software house that is the Fabulous Technology Solutions, and he's now getting work from international market and local market, and he's producing different solutions at the on software level. And the third example is our third speaker is Mr. Engineer Vakas Tipu.
Engineer Vikas Tipu is running his entrepreneurship in the name of by the name of EPS Solutions. Now we have with us Mr. Engineer Ahmed Kamal Sheikh and Engineer Sami Naseem. Mr. Vikas Tipu has joined us or not? Vikas Tipu is also here. So moving towards the session, proceeding further, first of all, I would like to invite Engineer Ahmed Kamal Sheikh to share his success story and his experience in the field of entrepreneurship. And a small introduction of Engineer Ahmed Kamal Sheikh is he graduated from Ali Ahmad Shah University, which is the electrical department of Ali Ahmad Shah University College of Engineering and Technology, which is the fundamental element or the pioneer college of the Mirpur University of Science and Technology in 2008. And then he continued his studies and he got MS in mechatronics from National University of Science and Technology. And then he started his entrepreneurship by the name of Compass Solar in 2012. And before wasting any more time, I would request Mr. Ahmed Kamal Sheikh to share his experience in the field of entrepreneurship. Ahmed Kamal Sheikh. Entrepreneurship. Ahmed Kamal Sheikh. अस्सलाम वालेकुम। जैसे थोड़ा सा तारुफ करा दिया गया, मेरा जना अहमद कमाल मीरपुर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ है मेरा, और बड़े एजाज़ की बात है ये कि मुझे इनवाइट किया गया अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। इससे बैचलर्स किया, इंजीनियरिंग की डिग्री ली, उसके बाद मुझे आगे भी जना अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स के लिए मैकाट्रॉनिक्स में मैंने जना सिलेक्शन की अपनी जना जो फील्ड में चलने के लिए। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि जना डिसीजन मेकिंग एक पॉइंट आता है बंदे के पास कि जना हम लोगों ने किस तरफ जाना है। आज जो ये वेबिनार भी हो रहा है, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप पे जना हो रहा है। उस वक्त हमारे जहन में ये चीज़ नहीं थी कि भाई हमने कोई इस तरह की कोई चीज़ करनी है, लेकिन एक था दिल के अंदर कि हम लोगों ने अपना कोई काम करना है, अपना बिजनेस करना है, लेकिन उस चीज़ का इम्पैक्ट हो। तो बीइंग एन इंजीनियर मेरे लिए सबसे प्रेफरेबल चीज़ थी कि मैं कोई ऐसे बिज़नेस की तरफ जाऊं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहन में बात आई क्यों ना इस तरफ जाया जाए। 2012 में मैंने सोलर एनर्जी के रिलेटेड साथ मैंने शुरू कर दिया काम थोड़ा बहुत। उस वक्त एक कॉन्सेप्ट भी नहीं था लोगों के जहन में कि ये कोई काम है। बहुत सी मुश्किलात आई, बहुत सी परेशानियाँ आई, हर्डल्स आई, ऊंच नीच होती रही, लेकिन हम लोगों ने इस काम को छोड़ा नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे जो मेन चीज़ है, आपको हार नहीं माननी। जिस शख्स ने हार मान ली वो बंदा आगे चल ही नहीं सकता, वो काम कर ही नहीं सकता। तो किसी भी सूरत में आपने एक फील्ड सेलेक्ट कर ली, एक डिसीजन ले लिया, तो उस डिसीजन के ऊपर रहना है। हाँ, और उसके अंदर करना क्या है, जो आपको मुश्किलात आ रही हैं उसको टैकल करना है, उनका हल ढूंढना है। किसी मुश्किल से, किसी परेशानी से, किसी भी आजमाइश से भागना नहीं है हम लोगों ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे जना साबित कदम रहने की तौफीक दी, और आज अल्लाह का शुक्र है तकरीबन हम लोग 2021 में इस वक्त जो काम उस वक्त स्टार्ट किया था, मैं वो अक्सर सोचता हूँ कि मैंने 10 किलोवाट सिस्टम लगाना था, 2 साल से ऊपर लग गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस एक वीक के अंदर मुझे 30 से 40 किलोवाट सिस्टम मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, और ये नहीं कि किसी बड़े शहर में बैठ के कर रहा हूँ। मैं मीरपुर के अंदर बैठ के इस वक्त जना 30 से 40 किलोवाट एक वीक के अंदर, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पास जो वर्कमैनशिप है उसके लिए जना काम करने वाले लड़के कम हैं, टेक्निकल स्टाफ मेरे पास कम है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ है कि जना जो अभी यूनिवर्सिटी से फारग हो जाएंगे, एक तो जना इस चीज़ के ऊपर हम लोग, कोई भी इंजीनियर है या जो भी है, इस चीज़ को जहन से निकाल दे कि भाई कोई काम छोटा होता है बड़ा होता है। अपने हाथ से जिसने जो काम सीख जाएगा, जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज, हाथ से एक्सपीरियंस आ गया, तो आप के लोगों को जो ना गाइड कर सकते हो कि ये चीज़ किस तरीके से करनी है। तो कंपस सोलर के नाम से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जना सोलर का भी बिज़नेस कर रहे हैं। उसके अलावा अभी मेरे पास माशाल्लाह 3 प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं इस वक्त। एक कंपस इको फार्मिंग के नाम से, और एक कर रहे हैं कंपस ई मार्केट। तो कंपस ई मार्केट जना भी मेरा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैं मोस्ट इंटरेस्टेड हूँ, ये एक फूड पांडा कॉन्सेप्ट पे मैंने एक ऐप यूनिवर्सिटी के जना कुछ साथी हैं मेरे, उन्होंने मेरे लिए काम किया।
और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं रखा मैंने कि जना फूड या कोई इस तरीके से चीज़ रखनी है और अपने बिज़नेस को बढ़ाना है। मैंने रखा है कि किस तरीके से मैं बाकी नौजवान लड़कों को और यूनिवर्सिटी से लोग फारग हो गए हैं उनको किस तरीके से हम लोग बिज़नेस की तरफ राग़िब कर सकें। और एंटरप्रेन्योरशिप जो मैं समझता हूँ वो एक ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है लोगों के लिए जिसके अंदर वो लोग खुद भी फ्लोरिश कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें। मैंने एक जगह कुछ कोट्स पढ़ी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो वो मैं थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। उनका उर्दू थोड़ा सा ट्रांसलेट ताकि हम लोगों को बात की समझ भी लगे कि जना हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्यों फोकस करना चाह रहे हैं। इसके बारे में जब कहीं पे मैंने पढ़ा कि ये एक आर्ट है। आर्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको इंसान अपने आप को जिसके ज़रिए से एक्सप्रेस कर सकता है। कोई भी इंसान होता है उसके अंदर जो ना कोई फीलिंग्स होती हैं उसको एक्सप्रेस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी जो ना वो एक आर्ट है जिसको हम लोग अपने तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसके ज़रिए से हम लोग वो बनते हैं जो हम लोग बनना चाहते हैं। हम लोग किसी के हाथ में नहीं चल रहे होते, कोई हमें मोल्ड नहीं कर रहा होता। आप वो बनना चाहते हैं जो आप लोग खुद चाहते हैं कि आप बने। और फिर क्या होता है जब आप उसके ऊपर साबित कदम रहते हैं उसके बदले में वो क्या देता है, वो चीज़ आपको ऐसी चीज़ देगा, ऐसी चीज़ प्रोवाइड करेगा जो आपको कहीं से भी नहीं मिल सकती। और ये क्या चीज़ है कि ये आपकी लेगेसी बनेगी। एंटरप्रेन्योरशिप जो बंदा इस पे इस्तकामत से रह गया वो आपकी लेगेसी बनेगी। हम चले जाएंगे, हमारे पीछे लोग ये कारोबार चलते रहेंगे, जो स्टार्टअप्स हम लोगों ने किए चलते रहेंगे। लोग पहचानेंगे हम लोगों को, भाई ये जो ना फलां बंदे ने स्टार्ट किया था, फलां बंदे ने कम, और उसके ज़रिए से कितने लोगों को अल्लाह रिज़्क दे रहा होगा, कितने लोगों के घरों के चूल्हे चल रहे होंगे। और इसमें मायूसी नहीं करनी हम लोगों ने। एंटरप्रेन्योरशिप जो बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है सबसे बड़ी चीज़ है इसको मायूस नहीं होना किसी भी चीज़ से, हालात को टैकल करना। अब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं इस वक्त माशाल्लाह जो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह मुकम्मल कर रहे हैं जो कर चुके हैं, हम लोगों ने उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। ये इदारा मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मेरे उस्ताद मेरे सामने बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं। और बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है मेरे लिए कि जना देखिए जिस बंदे ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो, कल को वो आपकी बात सुनने वाला हो, सामने खड़ा हो, आपको देख रहा हो कि जना मतलब लोग चाहे देख रहे होते हैं कि भाई ये बंदा आज क्या कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया इधर आके बात करने को। तो मैं सिर्फ, हमारा फ़र्ज़ ये नहीं है यहाँ पे कि हम लोग सिर्फ अपने बिजनेसेस को देखें। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, मैं चाहता हूँ मेरे साथ और लोग जुड़ते चले जाएं, अपने आइडियाज़ को शेयर करें, अपनी चीज़ों को लेके चलें। हमने जो कंपस ई मार्केट की जो ऐप भी डेवलप की है उसमें भी मैंने जो ना कोई लिमिटेशंस नहीं रखी कि सिर्फ मैं इसके ऊपर जो है ना काम करना चाहता हूँ और कमाई करना चाहता हूँ। उसमें क्या है कि हर बच्चा, हर लड़का जो फारग बैठा हुआ है या जो काम कर सकता है, जो मेहनत कर सकता है, वो आए, उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करता चला जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस जो ना बड़ा अच्छा रहा। और बल्कि मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों से भी अभी कहता हूँ कि अपना पार्टिसिपेशन इसके अंदर रखें। हर बिज़नेस के अंदर अपॉर्चुनिटी है, किसी बिज़नेस को छोटा नहीं समझना, किसी कारोबार को छोटा नहीं समझना। जिस चीज़ के अंदर आपका दिल लगता है आप उस चीज़ को करते चले जाएँ और मेहनत से करते चले जाएँ। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने शेयर करनी थी। और शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मेरे साथी बैठे हैं, सुनने वाले भी हैं, और बहुत से मेरे दोस्त भी हैं जो सुनने वाले हैं, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में भी हैं। तो मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि जना मुझे मौका दिया गया इधर बैठ के बात करने का। थैंक यू। अभी जना नेक्स्ट कोई जना पार्टिसिपेंट कर सकता है। अच्छा, चूंकि बिजनेस की नौयत डिफरेंट है तो मैं चाहता हूँ कि जो है ना साथ साथ ही आंसर क्वेश्चन हो जाए कुछ ना। अगर कोई ये रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से कोई क्वेश्चन है, सोलर के बिजनेस के हवाले से, तो वो अहमद कमाल साहब से अभी कर लें, फिर हम क्योंकि आगे जाएंगे समीर नसीम साहब की तरफ। उनका ज़रा बिजनेस डिफरेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसकी थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो अब इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो अभी कर सकते हैं। अच्छा जी, अहमद ये बता दें ज़रा कि ये एक फेयर आइडिया, अगर कोई नया इंटरप्रेन्योर या कोई यंग जो ग्रेजुएट है वो इस फील्ड में इंटर होना चाहता है, तो उसको ये जो है अपना इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कितनी अमाउंट चाहिए होती है इस फील्ड में इंटर होने के लिए? आप क्या समझते हैं कि कितनी अमाउंट से कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है सोलर की फील्ड में? जी अनम्यूट करें आप, अहमद आप अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी अभी आ रही है आवाज़? जी आ रही है, हाँ जी अभी। अच्छा, इस बिजनेस में जो ना इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा नॉलेज वो मैटर करता है। मैं जिस तरह अभी ट्रेन करता हूँ लड़कों को, उनमें उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है,
हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं ना पीछे, मतलब आप किसी भी कंपनी के साथ एफिलिएट हो जाएं, उनके साथ मिलकर काम कर लें, सीख लें और उसके बाद अपना काम करते जाएं। आपको नहीं ज़रूरत पड़ती कि जना भाई पीछे इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मतलब मैंने ज़ीरो से लोगों को देखा है। इस वक्त हम लोग भी जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बैकअप पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जना एक वीक में अगर 40-50 लाख का मैं सामान उठा के लगा रहा हूँ, तो पीछे ये नहीं है कि मेरे बैक पे सिर्फ ये है कि मेरी जना इस वक्त तो एक तो चले मार्केट भी बन, नॉलेज एक्सपीरियंस करता है। तो मैं अपने पास जो लड़के होते हैं उनको भी मैं जॉब पे नहीं रखता, मैं उनको तैयार करता हूँ, उनको कहता हूँ मार्केट में जाओ, जाके खुद से काम। मतलब हर बंदा एक किस्म का आपके लिए मार्केटिंग कर रहा होता है, वो अपने लिए भी कर रहा होता है। एक बंदे के सोच जानने वाले होते हैं और आप उनके साथ बात, जब आपका अपना एक्सपीरियंस गेन कर लिया। मेरे पास इस वक्त माशाल्लाह जितने लड़के जो मेरे पास काम करते थे वो सब अपना काम इस वक्त कर रहे हैं, और किसी के पास मतलब ऐसे घरानों से नहीं है कि पीछे बैक पे बहुत ज़्यादा पैसों की सपोर्ट है। वो जीरो, बिल्कुल इस तरीके से जीरो से शुरू किया उन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह काम कर रहे हैं इस वक्त। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको कि आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम अपने हाथ से करना है। इंजीनियर्स में हम लोग जब फारग होते हैं ना, ग्रेजुएट कर जाते हैं, तो हम लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम समझते हैं कि ये जो नट बोल्ट टाइट करना ये हमारा काम नहीं है। तो ये हर चीज़ ए टू जी आपको अपने हाथ से काम जिस वक्त तक किया नहीं, आपको इसकी ऊंच नीच करना सबसे पहली चीज़ है इस काम के बिजनेस के अंदर। और बाकी इन्वेस्टमेंट देखिए जिसने लगवाना है, मतलब मेरे बिजनेस की क्या नौयत है, मैं इस वक्त क्या करूँगा, किसी ने भाई मिसाल के तौर पे 10 लाख का सिस्टम लगाना है, मैं उसको बोलूँगा भाई 8 लाख रुपए दो मुझे, मैं तुम्हारा सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ। उसने 8 लाख की पेमेंट की, मैंने आगे से सामान उठाया, उसको सिस्टम लगा दिया, बाकी पेमेंट उससे बाद में पकड़ ली। तो मतलब इसमें ये नहीं है कि मैं आपके पास मेरे पास पैसा होगा तो मैं काम कर सकूँगा। तो ये थोड़ा सा इसका जो ना बिजनेस के हवाले से कि इतना पैसे की ज़रूरत नहीं है जितना जना आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी, any other question regarding solar business, renewable energy, entrepreneurship? अच्छा एमन, ये बताएं कि मिनिमम मैन पावर कितनी चाहिए होती है एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए? आप जो है ना वो क्या करते हैं, मतलब इसमें आपको मिनिमम जो मैन पावर है वो इसमें कितनी रिक्वायर्ड होती है? अनम्यूट कर लें आप अपना। जी, इसमें मिनिमम मैन पावर जो ना जो आपको चाहिए, एक तो आपको चाहिए टेक्निकल स्टाफ। आपके पास अगर एक या दो बंदे भी हैं तो काफ़ी हो जाते हैं, बाकी आपको हेल्पर चाहिए। मैंने मिसाल के तौर पे एक 120 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया, वो मेरे 4 लड़कों ने जाके इंस्टॉल कर दिया। मतलब उसमें ये नहीं है कि आपको जो ना बहुत बड़ा स्टाफ चाहिए या कुछ इसी के। आज मेरे मसलन इस वक्त 2 प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल हो रहे हैं, एक 10 किलोवाट का, एक 5 किलोवाट का। 2 लड़के एक साइड पे काम कर रहे हैं, 2 लड़के एक साइड पे काम कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी मैन पावर भी नहीं चाहिए, बस आपने वो कोई सामान को मूव करना है, वो एक तक पहुंचा दिया, बाकी 2 लड़के काम करते रहेंगे। अच्छा, यंग इंजीनियर्स के लिए ये बता दें कि एक यंग इंजीनियर जो इस फील्ड में एंटर होगा वो कितने अरसे में ट्रेन हो जाता है फुली, जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना टाइम उसको लग जाता है तकरीबन ट्रेन होने में? अच्छा, जो यंग इंजीनियर्स बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर डेडिकेटेड है तो आप समझे 2 से 3 महीने के अंदर उनको समझ लग जाएगी। लेकिन एक चीज़ लाजमी है इस काम के अंदर ना, मतलब आप इंजीनियर हैं तो थोड़ा सा फ़र्क है आपको जब जैसे नॉर्मल टेक्नीशियन में। आपको वक्त के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है। मतलब कोई मेरे से अगर पूछेगा ना मेरा बिजनेस क्यों इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है, मैं ये नहीं देखता कोई चीज़ महंगी है सस्ती है, मैं टेक्नोलॉजी को फॉलो करता हूँ। इस वक्त अगर मार्केट में कोई जो लोग जो ना लिथियम बैटरीज के बारे में जानते भी नहीं थे, 1 साल के अंदर अंदर मेरे पास जितने प्रोजेक्ट्स 95% जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं उसमें लिथियम, मतलब वो पता नहीं है लिथियम बैटरी क्या होती है लेकिन लग रहे हैं। तो मैं टेक्नोलॉजी के साथ मूव करता हूँ। जो इन्वर्टर मार्केट में इस वक्त सोलर इन्वर्टर 5 किलोवाट की मैं बात करता हूँ 80,000 में मिलता है, 75,000 में मिलता है, मैं इस वक्त 150,000 वाला इंस्टॉल कर रहा हूँ। क्यों? उसमें ठीक ठाक फ़र्क है कि जना टेक्नोलॉजी वाइज, वारंटी वाइज। तो इंजीनियर को उस चीज़ को समझना कि क्या चीज़ मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी टेक्नीशियन तो जना जो चीज़ आप उनको पकड़ाएंगे उसने उसको इंस्टॉल कर देना, तारे लगानी है उस। मेरे पास इस वक्त जो लड़के 6-6 साल से भी काम कर रहे हैं उनको भी जना मुझे गाइड करना पड़ता है रोज़ के हिसाब से कि भाई इस वक्त ये नई चीज़ आई है तो इसके अंदर आपने ये सेटिंग्स
करनी है, ये इसको इनपुट होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए। तो मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ, वक्त के साथ साथ चलना है हम लोगों ने। तो 2 से 3 महीने एक बंदा अगर डेडिकेटेड हो तो ट्रेन हो जाता है। जी बिल्कुल बताया जी, 2 से 3 महीने। अच्छा, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, ये बाकी पार्टिसिपेंट्स दिलचस्पी नहीं ले रहे। ये मतलब इस बिजनेस से रिलेटेड जो है ना, ये बताएं कि जो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम्स हैं, इनमें कास्ट के लिहाज से कितना एक डिफरेंस है, और क्या हमारे जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नेट मीटरिंग है या जो ग्रिड को हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके हवाले से क्या सिचुएशन है इस वक्त? क्या गवर्नमेंट इसको ऑन कर रही है या नहीं कर रही है? ये थोड़ी देर पहले जब शोएब भाई वगैरह ही बैठे थे यहाँ पे, मतलब 2 जो पार्टिसिपेंट पीछे वाले थे, मैं आपको इनके बारे में बताऊँ। इस वक्त फयाज साहब जो हैं, इनकी जो फर्नेस है वहाँ पे, उसका लोड है 5 मेगावाट का, 5 मेगावाट का, जिसमें से वो 1 मेगावाट इस वक्त उस पर सोलर इंस्टॉल करवा रहे हैं। 1 मेगावाट सोलर इंस्टॉल करवा रहे हैं, जो इनका काम अभी चल रहा है। इसी तरह शोएब भाई लोगों का जो ना, आपको पता है मेगावाट वगैरह का जो ना सेटअप है, इसके लिए 120 किलोवाट उन्होंने करवाया, और अब इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट हो जाएगा कुछ शायद अरसे तक। अब मुझे फ़िलहाल की प्रोग्रेस नहीं पता। और वो लोग जो ना चाह रहे हैं कि उनकी जो आज़ाद टेक्सटाइल्स हैं उस पर भी 2 मेगावाट तक का सिस्टम लगे। अब ये लोग समझ लें कि जिन्हें इस वक्त के की प्लेयर्स हैं गवर्नमेंट में भी और इस तरह की, लेकिन कुछ सिचुएशन इस वक्त शायद इलेक्शन की वजह से इस तरह की है कि ये लोग कर नहीं सके। मेरी बात हुई थी शोएब भाई से, थोड़ा सा जो ना डिले है, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में जल्दी। और कॉस्ट का और रिटर्न जो आपको इसमें मिलती है उसका बहुत फ़र्क है। मसलन अभी मैंने 15 किलोवाट का एक सिस्टम इस बहरिया में जो इंस्टॉल किया, वो कॉस्ट किया तकरीबन ऑन ग्रिड सिस्टम 12 लाख में। लेकिन मैंने मीरपुर में जो 20 किलोवाट का, सॉरी 10 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया है विद लिथियम बैटरीज बैकअप, वो 13 लाख में इंस्टॉल हुआ। मतलब आप देख लें कि तकरीबन 35% के करीब करीब कॉस्ट का फ़र्क आ जाता है। अच्छा, फिर रिटर्न क्या है? उनकी जो कॉस्ट है वो अब बहरिया में तकरीबन 35 से 40 रुपए यूनिट आपको बिजली कॉस्ट कर रही है। इस वक्त मैं आज की उसकी जनरेशन मेरे पास सब ऑनलाइन आ रहा है, तो नॉर्मल उसकी 75 टू 80 यूनिट्स पर डे जनरेट कर रहा है, जो 15 किलोवाट वाला सिस्टम है। तो इसका मतलब है 2000 प्लस 2400 यूनिट वो जनरेट कर रहा है। 100,000 प्लस उसकी जना समझ लें उसकी सेविंग है उस सिस्टम की। तो समझ लें 12 महीने के अंदर अंदर आप लोग उसकी कॉस्ट रिकवर कर जाते हैं। और यही सिस्टम अगर आज़ाद कश्मीर में लगा हुआ है तो वही आपकी कॉस्ट चली जाती है 3 साल पे। तो ये बड़ा मेन डिफरेंस है। इसलिए नेट मीटरिंग का होना मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, अभी जना बड़ा ज़रूरी है। हम लोग इस वक्त एक और चीज़ मैं बताऊं कि हम लोग जो ऑफ ग्रिड जो हाइब्रिड सिस्टम कर रहे हैं, हम लोग इस वक्त सिर्फ 40 टू 50% यूटिलाइज करते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, या आज़ाद कश्मीर के जितने भी इलाके हैं जो ऑफ ग्रिड सिस्टम चला रहे हैं। मेरे पास जो कस्टमर्स इंस्टॉल करें सिस्टम 10 किलोवाट वाले सिस्टम में से मुश्किल से उनका 5 किलोवाट यूटिलाइज होता है। 4 किलोवाट 5 किलोवाट मुश्किल से यूटिलाइज होता है। तो आधी पावर जो जनरेशन है उनकी ज़ाया हो रही होती है। तो ये बड़ा ज़रूरी एक चीज़ है कि जिसके ऊपर जो हमें फोकस करना चाहिए। और जिस तरह शोएब भाई ने, हम लोग शायद आपने अटेंड किया कि नहीं उनका, उन्होंने बोला कि जो लेट डिसीजन मेकिंग है ना बड़ी फैटल होती है। तो वो भी बड़ी ज़रूरी है कि जनाब आप किसी चीज़ को डिले करते जा रहे हैं तो एक बड़ा नुकसान करते जा रहे हैं अपना। तो ये सिचुएशन है ऑन ग्रिड और जना ऑफ ग्रिड सिस्टम के हवाले से यहाँ पे। तो लग रहा है आज ही नेट मीटरिंग तो बड़ा बेनिफिट हो जाएगा लोगों को भी। जी बहुत शुक्रिया जी। अहमद कमाल साहब ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और बताया हमें कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट इसमें इतना मैटर नहीं करती, आपकी डेडिकेशन, आपकी फील्ड के अंदर रहने की जो है वो चीज़ों को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है और उसकी आपकी जो इस्तकामत है वो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, नेट मीटरिंग और ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सिस्टम्स और एग्जिस्टिंग यूपीएस के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट जो इस वक्त स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर दुनिया पूरी में काम हो रहा है, नई से नई बैटरीज आ रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि इसकी लाइफ और इसकी पे बैक पीरियड के ऊपर काफ़ी बेहतर इफेक्ट्स है। और जो नए यंग इंजीनियर्स हैं वो इस फील्ड के अंदर कॉन्फिडेंस से जो है वो इंटर हो सकते हैं, क्योंकि आगे एक एमर्जिंग फील्ड है। फ्यूचर के अंदर इसकी बहुत जो है बहुत बड़ी एक कह लें कि फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए कि लोग जो है वो
ऑन ग्रिड सिस्टम एक तो हमारे लिए भी देखें कितने इश्यूज बन रहे हैं, दूसरा ये कि ऑन ग्रिड जो अवेलेबल होगी उसकी कॉस्ट जो है वो एक वक्त आएगा कि सोलर से बढ़ जाएगी। तो ये इसका जो है वो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बड़ी तेज़ी से इसकी तरफ आएंगे। जैसे इन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो मेगावाट के हिसाब से वो जो है वो सोलर की तरफ सोलर के ऊपर आ रही हैं, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। ओके जी, नाउ मूविंग फर्दर and proceeding further in this session, I would like to invite Mr. Sami Naseem, Engineer Sami Naseem, who is the owner and CEO of Fabulous Technology Solutions. And he started his company in 2019, and he is having 100 plus permanent customers all around the globe from USA, UK, South Africa, Korea, Australia, France, etc. It is an IT company developing softwares, mobile applications, websites, and electrical hardwares. And before without wasting any further time, I would like to Mr. Sami Naseem to share his experience. Engineer Sami Naseem. Sami, आप अनम्यूट कर लें अपना माइक जो है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चलो जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप करें, शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि आज एक इतने अच्छी वेबिनार में मुझे इनवाइट किया गया है, और सिर्फ इसलिए इनवाइट किया गया है कि हम अपने आने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेन कर सकें और उनको थोड़ा गाइड कर सकें कि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। तो सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर हसन जाफरी साहब का, जिन्होंने इतना एक अच्छा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कराया है। और दूसरे नंबर पे उसके बाद अपने प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर के सरदार मसूद खान साहब का, जिन्होंने इसका अलाउंस दी और इसमें ज्वाइनिंग की। उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब सर अंजर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली समझने वाली बात जो है वो बेसिकली है कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या चीज़ है, और इसके अंदर मतलब किस तरीके से जो एक स्टूडेंट है वो अपने आप को बेसिकली इस फील्ड में लॉन्च कर सकता है। चीज़ ये होती है बेसिकली कि एक बिजनेस है उसको मार्केट में किस तरीके से लाया जाए और उस पर वर्क किस तरीके से किया जाए। असल में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं रट्टा सिस्टम के ऊपर, या एक हम अच्छी कंपनी में अच्छी पे जॉब करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो ख़त्म करने का काम है ये बेसिकली काम है यूनिवर्सिटीज़ का। यूनिवर्सिटीज़ इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रही और सिंपली उनको लेके आ रही है कि आपको अच्छा सीजीपीए होगा आपका तो आपको आगे अच्छी जॉब मिलेगी, आप अच्छा अर्न करेंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि ये एक इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया गया है हमारी मस्जिद की तरफ से, तो इसका मैं ख़ास तौर पे सर संजाफी का दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर तो स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन है और हमें सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह वो इस मीटिंग से काफ़ी कुछ हासिल करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं अपना तारुफ कराऊँ तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, समी नसीम, ग्रेजुएट फ्रॉम मस्ट 1519, और 2019 में हमने बेसिकली इसकी बुनियाद रखी थी जिसका नाम है फैबुलस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, एंड करंटली आई एम सिटिंग इन माय ऑफिस। सो द थिंग इज कि हमने इस आइडिया के बारे में सोचा कैसे और इसको हमने स्टार्ट कैसे लिया। स्टार्टिंग में बेसिकली हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट आइडियाज थे जिन पर हम आगे जाके मतलब मैं अपनी डिग्री के बाद काम करना चाह रहा था। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कोविड ने 2020 में हिट किया पूरी वर्ल्ड की मार्केट को, और जितने भी बिजनेसेस जो ऑन साइट रन कर रहे थे शिफ्ट कर गए ऑनलाइन मार्केट की तरफ। तो उस टाइम ठीक उसी वक्त में कोविड में जो हमारा पहले से आइडिया था कि हम इस बिजनेस को लॉन्च करेंगे, तो अल्लाह के शुक्र से हमने उस टाइम पे बिजनेस लॉन्च किया, अपना फर्स्ट ऑफिस बनाया सियालकोट के अंदर और इंटरनेशनल मार्केटिंग अपनी स्टार्ट की। तो बेसिकली थिंग ये है कि उस दौर में 2020 के अंदर जब कोविड ने हिट करना स्टार्ट किया मार्केट को, तो जितनी भी ऑन साइट मार्केटिंग थी वो सब निकल गई सॉफ्टवेयर की तरफ, वेबसाइट्स की तरफ। और उसी टाइम अल्लाह के शुक्र से हमने भी अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की, तो हमने कस्टमर्स को गिरना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद बात है बेसिकली मैं खुद तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो हम सॉफ्टवेयर का काम कैसे कर रहे हैं या मोबाइल एप्लीकेशन का काम कैसे कर रहे हैं। देखिए, आपको मार्केट के अंदर हर चीज, हर किस्म का बंदा पैसों पे, खासतौर पे पैसों पे हर चीज आप खरीद सकते हैं। सिंपल इज दैट। तो ये जरूरी नहीं है कि आप खुद हर चीज में माहिर हों, ये जरूरी है कि आप
काम पकड़ना सीखें, मतलब कि आपको तरीका आता हो कि आपने काम को पकड़ना कैसे है। करने वाले तो आपको हजारों मिल जाएंगे। तो बेसिकली इसी रूल को, इसी फार्मूले को मैंने अप्लाई किया और काम पकड़ना शुरू किया, और अल्लाह के शुक्र से जब काम आता गया तो मुझे बंदे भी, मतलब कि डेवलपर्स भी और इंजीनियर्स भी मिलते गए जिसको हमने पे करना स्टार्ट किया। तो दूसरे नंबर पे बात ये थी कि मेरे साथ मेरे वालिद साहब की सपोर्ट थी फुल, तो मुझे अल्लाह के शुक्र से किसी किस्म के पैसों के हिसाब से कोई डिफिकल्टी नहीं पेश आई, क्योंकि मेरे पास ऊपर मेरे वालिद साहब की सपोर्ट थी। तो दिस इज ऑल दैट। करंटली जो हम हैं, हमारा जो इस टाइम रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन पर मंथ पाकिस्तानी रुपीस जा रहा है। और दूसरे नंबर पे हमारा जो हमारे पास जो इस टाइम वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारा स्टाफ है, वो अभी 18 प्लस को टच कर रहा है, ठीक है। और ज़्यादा लड़के जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं वो फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, जिनके अंदर कुछ डेवलपर्स हैं और कुछ मार्केटर्स हैं। और ऑन साइट जो हमारे पास वर्किंग है वो है ऑलमोस्ट 6 to 7 people in my office. So if you are watching, Saranzar, I can show you my team. So basically these are the people who are working with me in my office. तो ये एक छोटा सा हमारा सेटअप है, एक छोटा सा कमरा है जिसमें बैठ के हम आप कह सकते हैं कि अल्लाह की करम से 1 मिलियन प्लस मंथली अर्न कर रहे हैं। और अगर तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूँ, दिस इज जस्ट फॉर मोटिवेशन फॉर माय ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर वाचिंग ना, सो दैट कि वो भी देखें कि अगर एक 2019 का ग्रेजुएट बंदा जॉब नहीं करना चाहता और बिजनेस की तरफ आना चाह रहा है, तो वो अर्न क्या कर रहा है इस टाइम पे, वो इस टाइम कमा क्या रहा है। So I am sharing my screen if everyone can see here. Okay, is my screen visible? Saranzar, is my screen visible? बस 2-4 सेकंड में हो जाएगी, अभी शो नहीं हुई, थोड़ी देर में हो जाएगी। जब हो जाती है मैं आपको फीडबैक देता हूँ। Okay. Now actually it's visible from my side, ना? हाँ जी, आपका डेस्कटॉप यहाँ पे शो हो रहा है, आप अपनी वो इस पे शेयर करें ना जरा, जो प्रेजेंटेशन या स्लाइड आप शो करना चाहते हैं वो शेयर करें। हाँ जी, now you can see. आ रही है, बिल्कुल So नजर आ रही है। basically you can see now this is the total income we earned in last 4 months, only in last 4 months. Okay, and this is which we are going to earn this month, which the pending clearance that will come here actually, na. So and this is the expected earning. Today is 6th of June, and this is actually the earning which we are 10th of June, and this is the earning which we have done till yet. So sharing my screen, actually आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाने का मकसद ये था कि भाइयों जॉब में कुछ नहीं पड़ा हुआ, जो सिंपल सी चीज है, अगर कुछ है तो वो बिजनेस में है, ठीक है।